Yeah, that's the first one. Okay, let me see who can send the fanciest emoji. Come on, let's see. Let's see who finds the most exciting emoji. Oh, I like the rocket. Oh, fire. Good. Come on, discover emojis. Don't just see the first five. Oh boy, my God, bro. That was a tough one. Yes, that's a morning sign. Boy, Jai Hind. Jai Hind is here. Okay, explore more emojis, just not the first ones. There are lots of them behind them. Find one that reflects your mood, that reflects your day, and that gives us all energy. Oh, good. Someone found a clock. How beautiful. Enjoy your workspace on Zoom and make the most of your Sunday. It's a special Sunday. I'll tell you why in a minute. Yes, I like that. I like the anchor and the dolphin. Good. Discover more, discover more. Oh, another one. What a beautiful moon. You want me to sing a lullaby to that? Yes, champion. Bang on. You're on target. Absolutely. When you come to my good school, you're on target. That's an interesting one. Where do you find the snowman? Let me see. What more can you find? Oh, hello, another one. What a beautiful wave. Good, good. Find them. Yeah, we like the clouds. It's absolutely it's cloud and sunshine. That's the mood of the day. That's the mood of the day. Yeah, Manisha, that's okay. Just explain all this. Yeah, Sure, perfect, sir. perfect. I mean, I think. Good Have you? morning. Good morning. Have you done a post for them? So, Brinda, no problem joining. No, not yet. Yeah, yeah, Except that I've misplaced my spectacles, but I'll be able to read. Not to worry. yeah, yeah. We'll give it to you nice and big on the screen. So that's Yeah, not. yeah. Do that. I've been telling people that a simple way to Do read a that. book is pick up your phone, open the camera, and read the book through it. Yeah, yeah. Right. The camera gives you the optics of. See, actually, Apple Hmm. looked at how people are challenged for sound, Okay. for visual, for haptics. So Right. Apple is so friendly that you can. They are the ones who thought everything a phone can do should be available to everyone. Yeah. Yeah. So that's why if you go in the settings, they also tell you if you have a challenge, this is how you can modify your phone. Right. So Right. phone is a very good tool. It's perhaps Yeah, the yeah. I think if you look at Underused. the last 1,000 years, it's perhaps the biggest innovation in the world. True. Yeah. Uh, Jugjiv sir, I thought you had run away. Why have you turned up? No, I didn't say I've run away. Who said I've run away? You said today is Brinda's day. I thought you were not coming. Oh, someone sent a beautiful No, share. no, I just said I'm like basically on chutti. That doesn't mean I don't come. I mean, I don't have to do anything. It's like in our bookstore and cafe. So someone comes without a uniform. That signifies that person is on chutti that day. And then they won't go behind the counter. They will sit in front, either on the cafe table or they will sit at the sofa in the bookstore. And no one Right. says anything to them that day. So they'll come. They can't stay home because they got so used to the environment. So they will Yes. even come without uniform and their cash and sit there. That's what the True. place does. Yeah, So yeah. thank you. I thought I'd come in today to do two things. First, let me give everyone a surprise. I'm going to, Jugjeev sir, I'm just whacking your joy of learning diaries for a second. Yeah, please, please. The force behind success is here today. And may I please request the force behind success to read her post? Mm, Please read your post, force behind success. The force behind success is here. She will read her post. I'm sharing my screen. Over to you, Manisha. God bless you. Please unmute and read, Manisha. I'm already unmuted. I'm humble. Why are you speechless? It's your post. If you don't read it, Jugjeev sir will clobber me. He says, अपनी hmm. post अपने आप पढ़ो. ये मुझे जुगजीव सर ने सिखाया.
और हमने अब सोचा हम आधा घंटा सिर्फ पोस्ट ही पढ़ेंगे, बिकॉज जुगजीत सर ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस इंट्रोड्यूस की है कि जो पोस्ट है वो हमको खुद पढ़नी चाहिए, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे वो इंग्लिश में हो, चाहे वो पॉडकास्ट हो, चाहे वो प्रेजेंटेशन हो, चाहे वो वीडियो हो। हमको गर्व है हमने ये काम किया और इसको हम सबके साथ शेयर करेंगे। So over to you, Manisha ma'am. We start with your 1 year birthday celebrations at my good school. So Manisha ma'am is 1 year old. So everyone can send her a 1 year old card. She's 1 year old today. So today, Manisha I ma'am, just read want your to post. celebrate my Yeah, read your post and yes, then Jugjeev sir will yeah. take over and invite the others for the other posts. Today, I just want to celebrate my first year's birthday and move on to second year. So this is basically my journey in my good school. So as you all are aware that you're sending your post to me and I'm making little corrections and putting it across. So this is what exactly I want you all to understand that together we all can do many things. We all can win. We all can move on. And learning from mistake is one thing which we all should start, be ready, and move on. So, my post: drive the force behind success from first step to full circle, a journey we didn't drive. It began with a question: what truly makes a school good? I didn't have the answer then, but I had curiosity, and sometimes that's enough to begin. Neeta, my mentor, didn't hand me the answer. She offered scaffolding, gentle nudges, reflective pauses, and space to explore. Helped me see that a good school isn't defined by buildings or rankings, but by its soul, its people, its purpose, and its practices. She let me climb at my own pace, not rushing the learning, just guiding it. That's where I found my first deep direction. Then came the voice behind the movement, Sandeep Dutt, a mentor, not an instruction but an inspiration. He didn't just show the way, he walked with me, from helping shape my first student post to allowing me the space to correct, create, and eventually lead. He helped me tap into my second D tree. The rest followed like ingredients into a simmering pot. From designing graphics, writing reflection, to conducting a session in Hindi for students on a Sunday. It wasn't just learning, it was living the learning. Each effort, every retry, every Sunday spent refining my thoughts taught me the value of dedication. And when I stumbled, as learners often do, even now I'm stumbling, it was the fire within, the silent push to continue that revealed my own determination. Together, these four pillars became my foundation, and like any good recipe, it wasn't just one spice, but the perfect blend that brought flavors to my journey. When you dare to dream, directions find you and drive takes you further. To everyone who walked beside me in this journey, thank you for the patience. Jugjeev sir, a very big thank you to you. The belief and the freedom to grow without limits. My good school didn't just change how I see education, it changed how I see myself. Thank you. Over to you, sir. Over to you, Jugjeev sir. From my side, Jugjeev sir, आपको मैं हाथ जोड़ के दिल से नमस्कार करता हूँ. God bless you. I love you, Brinda. You know that. So, very big Thank you, Sandeep. morning to Jugjeev sir and Sandeep sir, Vidya ma'am. And thank you so much for guiding me and on my journey over here. Thank you. No, thank you, Manisha. The all the plaudits go to you. I mean, for for this journey and for your dedication to what all of us are trying to accomplish. So, I mean, I think your conscientiousness comes through. So, thank you for that, and looking forward to many more years. So, thank you. Uh, you know. Brinda, I was thinking that you normally run away after reading, so I didn't want to do the Joy of Learning diaries before your session. But up to No, you. actually, you know what has happened? I almost didn't join today. I'm in Chennai. I came for a family function. Then Right. Manisha told me just 10:30 to 11:30. So I said, okay, I think I'll be able to, isolate myself for that much time because we are Yeah, at yeah, my yeah. So that's right. brother's Then let's get place, to the and yeah, yeah, yeah. No problem. So let's get to the your book straight yeah. away then.
Yes, Manisha, please. just Yeah. share, and then we'll do the Joy of Learning diaries later. Sure, so I'll do that. So while Thank you. we're waiting, Brinda, Thank you you. know, Just buzz me. Yeah. Sorry. yeah, Sandeep. Yeah, just buzz me if you need me. I am involved in something, so just shout for me. That's all. Yeah, no problem. Yeah. So, Brinda, while we're waiting for Manisha, Yeah. last time you'd given some tips on reading and really around the punctuation marks, and you said you'll Yeah. 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 talk to us next Hmm. round. Oh, anyway, it's there now, so go for it. You All can right. enter spaces Okay. whichever you want. So, I hope all the children who were there last time with us are here today again. And you might remember what we read in the last chapter, which was rather interesting. And now we have a new chapter. And at the end of the session last time, I did give you some tips on how you can read with proper expression. So today I'm going to read the whole chapter and explain wherever I think it is necessary. So if you listen to me carefully, if you follow me carefully, you will notice that I actually pause at certain places. So if you do that, good listening will lead to good learning. So just listen carefully and try and get the hang of how we can read well. So this is how we will practice our reading. So today's chapter is about something special in the air. Having examined taste, it seems obvious to take a closer look at the sense of smell. Animals definitely have a sense for what smells good and what smells bad, as with taste to test food, but it is useful in other ways that are also familiar to us. One of these is making oneself attractive to the opposite sex. I have to say that in autumn, our Billy Goat Veto demonstrates just how far humans and animals diverge when it comes to sense we experience as pleasant. As I mentioned earlier, he uses his own perfume, his urine, to make himself attractive to the two female goats in the herd. Because of this, my wife changes her clothes and wears a cap when she visits them in the stable. Because the penetrating smell doesn't only drift through the whole yard, but it also infiltrates fabric and hair. So, see those two words, interesting words over here, penetrates and infiltrates. They're very similar in nature. Penetrates means going right through, and infiltrates is something that gets into something and stays there. So infiltrates fabric as well as hair. So see the way the smell has been recognized and how this lady takes precaution to see that she's not going to carry it with her all the time. But what we find disgusting might be due to the culture of our times. Acquired tastes probably explain why deodorants were not yet in common use 200 years ago. Out on a military campaign, Napoleon supposedly once wrote to Josephine, I return to Paris tomorrow evening, don't wash. The 16th century Spanish conquistadors wanting to differentiate themselves from the fastidiously clean Moors, whom they had just driven from the Iberian Peninsula, also had their doubts about the benefits of bathing. And when the Aztecs in Mexico met these light skinned strangers for the first time, they immediately smelt the difference between them and their own people who used steam baths for their personal hygiene and thought it was nauseating. Old, well aged cheese is a contemporary olfactory example. Olfactory's got everything to do with the sense of smell, children. And you will find here how beautifully this writer is combining historical facts while he's writing about the habits of animals. So he's talking to us about Napoleon, he's talking to us about the people from the Iberian Peninsula,
and he's talking to us about the beliefs that people have about bathing. Not everywhere in the world do they bathe as many times as we Indians do. So this is something interesting we need to make a note of. Dried out milk protein, described as rotten, and which under other circumstances would make people gag. I list these examples not to put humans on the same aldiferous level as animals that stink. Not all. I'm merely pointing out that people too differ greatly in what they perceive as smelly. Dogs trump billy goats when it comes to stink. Our dog Maxie loved to roll around in feces, which have a particularly penetrating aroma. Fresh cow pads were another source she liked to use for special scents. For a long time, people assumed that their four legged companions rolled in dung to disguise their own scent. The theory was that this gave dogs, or at least their wild ancestors, better luck when hunting. Today, dogs and wolves are thought to use scent to relay messages, or perhaps they simply want to stand out in the pack. And clearly, they don't find the smell, especially the stench, Manisha ma'am, the stench of rotting meat or herbivore feces unpleasant. Quite the opposite. Don't doesn't that remind you of people and their relationship to perfume? You just need to be careful if your dog rolls in or even eats forks or dog feces. Fox feces, in particular, may contain fox tapeworm eggs. These eggs are as tiny as specks of dust, and after such a fecal bath, they spread likely as not all over the living room. You then take the place of the mouse that was the egg's intended host. The developing larvae settle in internal organs and make the mouse stick to slow it down. Foxes then catch the moving mice, which completes the worm's life cycle. But not, of course, if you are acting as the intermediary host instead. People get a severe infection that can be difficult to cure depending on how far the worm infestation has spread. When your dog comes home decorated with fresh feces, this is one time when it's definitely a good idea to give it a thorough drenching in the shower. Even though their rating system differs from ours, animals are aware not only of things that smell good, but also of things that stink, particularly when it comes to their own excrement. Herbivores are better off not browsing in places where they have deposited a pile of droppings, because practically every deer, goat, or cow has worms in its feces, and a correspondingly large parasitic legacy can be found in feces. Take rotting meat or herbivore feces, lungworms, for example. For every 30 grams of feces, there can be up to 20,000 eggs, which are then re ingested when the animals browse. Because massive worm infested herbivores are the first to fall prey to lynx and wolves. So it is only logical as absolutely revolting to ensure it gives it a wide berth. I believe that the smell of their own feces is just as awful for most animals as that of human feces is for us. Many domestic animals indicate that this is indeed the case. In the pasture, our horses retreat to a private corner that they use only for defecation. Out in the wild, thanks to the horse's abilities to move around freely, there would be no danger of eating in the same place too often.
When we inhibit such movement, horses make do by finding appropriate spots in the pasture. Then that Hazel, Emma, and Oscar, our rabbits, designate a toilet area in their hutch and run where they do their main business. The only place where this doesn't happen is on factory farms, down in their fecus. The only way to avoid severe worm infestations on these farms is by regular doses of medication. It's a shame the pills don't get rid of the stink at the same time. Many animals are as embarrassed about defecation as we are. When Krusty the bulldog was on a leash, he would pull away from us into the undergrowth if he had major business to attend to. What's more, he would turn his back to us so that he didn't have to look at us. Clearly, he was embarrassed to be seen when he was squatting. Apart from the smell, it is also just as important for all animals to be clean. Like us, they feel very uncomfortable if they have fecus or other dirt stuck to them. It's probably the reaction of their fellow animals that reinforces their feeling of discomfort. An animal with a dirty backside signals that it's probably ill and that's why it has diarrhea. Other animals don't want to catch something nasty and certainly don't want to mate with a soiled partner. And that's why, like us, animals take pains to clean themselves. Although it must be said that clean means something different to animals than it does to us. Wild boar, for instance, love to cool down in summer, and they do this by enjoying a good wallow in a mud hole. And I'm sure all of us are familiar with sights of buffalo, wallowing in dirty water. Cows, buffaloes, and elephants love doing this also. They like to smear themselves with the cool, um, the slush actually, as it is called, in order to make themselves clean. So, children, this is what animals are all about. All over the world, different kinds of habits of animals grunting and twitching their tails. They take their time rootling around, stirring up the mud, and then settling down for a wallow. By the time the procedure is over, the pig is covered with a layer of beige colored mud. And yet the pigs don't feel dirty. And why should they? Isn't the human equivalent an expensive spa treatment with a pack of mud or peat? See how human like. The wild boar feel the same, all fresh and clean. And there's a reason for that. As the mud coating dries, many parasites such as ticks and fleas are baked into it. Once the crust has hardened, the pigs rub it off on specially selected rubbing trees. They use the same trees or stumps for many years, and over time they are rubbed smooth. Afterwards, the pigs are free not only of the little animals plaguing them, but also of old bristlers and hairs, which can be just as itchy. It's the same for our horses. They too like to roll around on the ground, especially when they're losing one season's coat and replacing it with the next. Depending on the weather, they can also end up with mud all over them, just mud, mind you, not feces. So that chapter is over. Jugjeev, do we read another chapter? Yeah, Brinda, but we can just talk a little about what we just read. I mean, Yes. it's very intriguing to me that animals are so conscious about smell and all the stuff that you read, Appearance. and Yeah. how they're also able to differentiate what they like and what they don't like in smell, just like we can. You know, Yes, absolutely. so Yeah. it's very And also, interesting. one very interesting thing is that just as human beings are so conscious about
their appearance, especially when it comes to when they're around people of the opposite sex, or when they want to please someone, when they want to impress someone, they take special care to groom themselves. And animals seem to be doing the same kind of thing. I mean, after all, human beings are also animals, I would say. So the Right. instincts are the same, if you actually look at it. And David Attenborough has made a series of films in which you Right. can notice this animal behavior. And there's a whole lot on birds and how their plumage, their feathers, they take a different color, and how they actually, preen themselves before they mate, or if they have to attract their mate. And largely it is the male birds, the male species of the birds, which have these beautiful plumage, the colors, and the way they are shaped, and the way they in the mating season, how they become even brighter or more beautiful, and have a very defined pattern and a very definite way of happening. So animals go about that. And I think we as human beings, when we have domesticated animals, we have interfered so much in this natural process that sometimes we do a lot of harm to them, just as this author mentioned in the last chapter about the hen and the all these hen, or the ones they breed for eggs. They're all put together, and they have to live in such dirty circumstances sometimes. So these are things that children need to think about. But the ecosystem needs this. We need it for our survival. They need it for their survival. But we've So, got just wanted to, yeah, I just wanted to share with to everybody see that, how things can be made better, I suppose. yeah, yeah. So, Brinda, your voice sometimes is cutting. So just maybe if you switch off your video, maybe Oh, better, because I think this the signal is a little bit of an issue. So you just switch it off, it'll be fine. I think. I think today, because I'm out, maybe, yeah. Yeah, If I switch off, what? the video, your video, maybe then I'll the switch off my video. Yes, that's a good yeah, idea. Yeah, yeah. yeah, yeah. Is that So better? well, we'll figure out as we keep talking. Right Yes, now, okay. yes. Yeah, The okay. I was just trying to one thing I wanted to tell children was that we've actually moved to the webinar mode because the Hmm. webinar allows us to accommodate more than 100 children. Last time, once before, so we had this issue, so that's why we moved to the webinar. The problem in the webinar is that everybody can't share their video and they can't unmute themselves. So Yeah. if we want participation, but the way to go about that is you raise your hand and Manisha ma'am will unmute you. Manisha, Hmm. figure out the system how to do that. It's very Manisha. simple. Just go to the attendee list, allowed to talk. That's all. It's very easy. You can do that. When you I'll go to be the able to do attendee that. list, you see Yeah. any child just allowed to talk. That's it. Any teacher, anyone, just put on to talk. It's as simple as that. Right. You can lower hand, you can raise hand, you can do everything from the attendee list, from participants. Okay, There's so when I 79 go to the participants today. attendee list Yes, now, allowed to there. talk. That's what Manisha will Okay, do. Manisha will do that for you. I'll do okay, that. no, no. But I cannot see any hands up. If there'll be something, I'll just put up. Yeah, I yeah, yeah. No, because we just want to make sure that people Yeah, if they are want to around. participate, and they have Yeah. any But questions to ask, actually, yeah. my computer So was troubling me. Pranjal, grade 9, do you wish to speak something? Yeah, Pranjal has a hand up. Hmm. So you just unmute her. Brinda, I'm not able to. Sorry, Manisha, I'm not able to do that. Sir, I've No, already done it, but the child has muted hang on. himself. They were just Okay, so experimenting then hand up. That's all. They were not doing just anything. just unmute Meenakshi.
and then maybe we'll just test this out, please. Meenakshi, I have to see where is she. Yeah. Meenakshi ma'am, you have to unmute and talk. Yeah, I've got it. I'm here. Yeah. Okay, great, great, it works. So Yeah. that's how the system is for Jugjiv, everybody. You the just raise system your is hand, absolutely Manisha, and simple. Sorry for coming right in. I came in today only to explain all this. It's actually become easier and more administered. One, the chat has Mm. not been withdrawn. Chat is as always. Reactions are as always. When you want to talk, you put your hand up, we allow you to talk. And that's what happens in the class. The teacher tells you now you can talk. You don't start talking till the teacher does not invite you, even if you have a hand up. So you raise your hand, the teacher looks at you, please talk. So Manisha will look at that person and say, please talk. We are as good as a virtual class. Thank you. Ayan Mishra, I've already. You can talk, Ayan Mishra, if you want to say something. And in case you're. I learned in this chapter the that the problems of the animals. Thank you. Wow, You that's learned good. about the problems of animals. Okay, Yes. all right. Brinda, Which may I class are suggest, you in? Brinda, may I just make a suggestion? Please don't read a second I'm a chapter Yes. today. Your I'm in audio is class poor. three. Okay. Yeah, don't read a second chapter today, Brinda. Audio is very poor because last chapter we lost. All I right. was watching the recording. We weren't able to get at least Okay. 7, 8 sentences at all. Oh, all right. All right. Okay. Thank you. Okay. Got it. Samar Sharma, your hand is up. You're the Jane next. ma'am and Jane sir. I really want to talk about the inner life of animals. As per the reading, I got to know about how many difficulties they have to face in their lives. Which difficulties are you talking Ma'am, about? just like the you are talking about the pigs, they live in muds, but Hmm. as Hmm. they like, but we doesn't like it, and the humans also many times humans also beat them because they are dirty. Yeah. Okay. 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 So actually it's animals a have a good fairly thought that we can all think about in order. Yes, Jugji, please carry on. yeah, I'm saying actually animals have a fairly simple life, right? And they wake up early, they hunt for food, then they relax, then they wake up again, they hunt for food, then they relax, and then there are times of the year when there is mating season, then they go through that process. Otherwise, they move from place to place. They're chirping. It seems when they're chirping, at least birds I'm thinking of, they're like happy, and it seems to be, in many ways, it's a good life, right? But as you said, we humans have made it complex for them because you've reduced their habitat that they can sort of operate from. So that's the biggest challenge they face, and they get hunted, and then we catch them and make them do things that they if they were free they wouldn't do. So those are my Hmm. thoughts on the question you asked. Right. So, children, some of you have been Brinda, asking Brinda, whether poor you audio. Brinda, no can audio. Brinda, no audio. Brinda, we relax. Brinda, please will relax. Let's not lose our time. give you a chance. Brinda, please, poor audio. Don't use the time. Please, poor audio. Okay, Very poor audio. okay, okay. Yeah. Arav Jyoti, over Kejriwal, to you're you. next. Yes, ma'am. Ma'am, from this chapter, I have learned that we human beings are not the one who have feelings, but animals also have. There are many difficulties. We human beings are not the only one in the earth that we are the only one who can do everything, but Wow. animals can do everything. May I suggest something to everyone? You all are having very wonderful thoughts, and it's intriguing me to post your thoughts on a website. Why don't you write as a reflection and send it to me so that not only the one who is present here during our webinar, others can also read out your thoughts.
So I request, instead of saying it now, write it down. Yes, Sandeep sir, over to you. Yeah, Manisha ma'am, they can write in the chat box. We get the chat history. We can even pick up the reflections from the chat box. See, you are asking them to send reflections, but the schools don't let them email. And the school teachers don't have the time to collect the reflections from every child. This is the vagary on the ground. You'll ask for reflection, leaving aside 2, 3 school teachers and GSA coordinators who put them together. Others have no access to the internet after that. So better they talk here. You can make notes. That's one thing. Second, they write in the chat box. Pick that up. So now Uh, you don't have to do reflections like you used to, because that your AIs have all gone to give you notes. That won't happen now. That is not required. It's better we now make notes and start writing and creating reflections ourselves in the Zoom sessions. So this is going to really help, because if you ask me, this is going to be the turning point in my good school. Capturing receptions inside the good school. So whether you I, use a video camera, note recorder, or whatever, capture the reflections right here. Similarly, some children want to read, they will read right here. So we will do everything within our 2 hours, that hoping that nothing will come after we close. That's how we are trying to plan everything out. So that's why Jugjiv sir's joy of learning time, as well as their reflection time, let's try and bring it all in. Jugjiv, does that help? No. For folks, who can't do what you're saying, this is a great way. But Yeah. for folks who can and who can do the reflections, uh, they should continue to do the Yeah, that will reflections. continue. Because I'm just giving this opportunity to new people who don't yeah, have access to sending reflections. That's the challenge. yes, Yeah. yes. So I think both systems need to continue, because there's a lot of value in when you are, doing it aram say, writing down stuff, thinking, redoing it, all that, which may not be possible in chat. So, but if you can't do that, then please do what Sandeep said. That's very, very valuable. So, Manisha, I am a little handicapped because my computer is giving trouble, so I had to join from my tab. Now the computer is opening up, so it's taking time. But do you want to go to the Joy of Learning diaries and get folks to read some of the stuff they've written? Yeah, Manisha, you can share screen. We have read your post just now. If you need help, I'll pull the Joy of Learning diaries in. You can do it easily, Manisha. yes, so just give me a minute. I'll open it. Yeah. There's a beautiful post this morning, Jugji, from Sunbeam Lehertara. And I think it's one of the better posts that have come, because they make presentations. And inside the presentations, they have covered a varied fare of what we have done at my good school. So they will write about door to door bookstore, they will write about everything that happens. And like they make a presentation, it's a very nice one this time. Beyond that, we have a lot of reflections in Hindi for the Hindi book. We also have reflections in English for the Hindi book. So see the beauty. The Hindi book was read in Hindi, but the reflection has come in English, and I really deeply appreciate that. A child could convert the language to share a reflection. I think that's creditable. Is my screen visible? Ashwi just said we are reading very fast. Ashwi, the problem was with the audio of Brinda ma'am. Jugjiv sir and Manisha ma'am and me, we try and read slowly, and we will do that so that you all can understand. Our apologies to you, your mother, or anyone who's around. Thank you for bringing this up. We have to read slowly, and Jugjiv sir will take care of that. Thank you, Jugjiv sir. So this is are these children here? Kaushik Jaiswal, are you there? Which Sunbeam school is this from, Manisha? So this is Latara. Lehtara there today. So is Kaushik there? Kaushik Jaiswal. Okay, anybody else would like to read? हाँ हाँ Last कुछ time there were a lot of volunteers to read.
But this time when we're giving now, saying read, now nobody's volunteering. Yeah, Okay, that's some good. Arav number has is there. I've volunteered. given permission. And there is some secret agent, 1x dot 0001. Naam likh lo yaar, please. Please change that 1x001 to your name. Arav, Manisha, if you can just unmute him and he can read, and then Ashwi can So read. they have to unmute themselves now because permission from my side is already gone. Yes, ma'am. Okay. Okay. Yes. Sir, shall I start? Yes, but please tell people behind you to be quiet when you read, please, huh? Because we can Okay, hear a sir. lot of talk Sir, from the just back. can you give me a second? Yes. Yes, sir. Go Shall I ahead. start? Yes. Success is never final. As stated by Winston Churchill, Steve Jobs faced many challenges but never gave up. He was resilient and kept trying new things. Jobs co founded Apple, was forced out of the company, but later returned and made it successful again. His story teaches us about perseverance and importance of not giving up when faced with setbacks. A demonstration using coffee, eggs, and carrots was given to illustrate how different people react to challenges in life. Some become stronger, like coffee, while others may become weak, like eggs, or soften, like carrots. When faced with difficulties, the main lesson is to stay strong and adaptable in the face of life's challenges, just as Steve Jobs did through his career. By Kaushik Jaiswal. Thank you. Thank you, Arav. Thank you, sir. Next one, Manisha. Who wanted to read 1x0001? Pata nahi, please put your name, redo it, then we can call out your name. Meanwhile, I think Ashwi wanted to read, right? So, yeah, Samar, Ara, Vayan, they all are having Pranjal, they all have permission to talk. Ma'am, can I Right. read? Samar, okay, Samar, I see your name right on top in my. Samar, you can go ahead, Okay, but sir. please tell people behind you to be quiet so that we Okay. can hear you. Okay, sir. I'm going to start. Yes. Preparing children for the modern world goes beyond academic success. It is essential for them to develop emotional intelligence, managing their feelings, empathizing with others, and coping with stress and peer pressure. Strong social skills, effective communication, and a sense of independence are vital for building confidence, resilience, and healthy relationships. In addition to emotional and social growth, children need practical life skills such as time and money management, basic hygiene, and cooking. A strong moral foundation and digital awareness are also crucial in today's world. The ultimate goal is to equip children with a well-rounded set of rules and values, empowering them to face life independently and ethically, rather than shielding them from its challenges. By subject level. Okay. Thank you. Ashwi, let me ask, is Aman here? Aman Kumar, who's written this? No? Okay, Ashwi, you want to read? No? Okay, Abhyansh, no? Medha, no? May I speak? Ayan, yes, please go ahead.
Yes, sir, I want to speak. I am Medha. Now just wait. You can do the next one. Ayan, you want to go ahead? It brought it Yes, sir. brought back to it brought it brought back the charm of face-to-face interaction and personal recommendation. Meeting people at their homes create a unique bond between reader and seller. It was more than selling books, it was about sharing stories and igniting curiosity. Many welcome to any initiative. Creative. Enjoying enjoying a surprise visit of the traveling libraries. Some were hesitant at first but warmed up after browsing and diverse selection. It reminded me that books are still powerful tools of connection and conversation. Each Okay, doorstep thank you, had a thank you, story. thank you, Ayan. Thank you, thank you, thank you. Medha, go ahead. We have lots of people. Let's give more people chance. Thank Medha, you, sir. each doorstep one I word. will read. Each doorstep had a story. Each person had a different taste in literature. Children's eyes lit up at picture books. Adults asked for thrillers and memories. I learned Memoir. to listen more than talk. Understanding readers' preferences was key. Go ahead. Okay, sir. There were challenges too. Closed door rejections and long walks. But every successful sale felt like a victory for books and literacy. The joy on someone's face when finding the perfect book made it all worthwhile. Okay, thank you, thank you. Ashvi, Thank you. Ashvi, Kshitij. Sir, may I? Yes, sir. May I speak? I can't see you on my screen. Who's that? Sir, Aradhya. Aradhya. Please go ahead. Yeah. It was a taste of patience, perseverance, and a genuine passion for books. Not every day was a fruitful, but every day taught me something new. It helped build confidence, improve communication, and develop empathy. Book became bridges between strangers in quiet neighborhoods. One book, one doorstep at a time. We brought stories to life by Yaman Kumar. Thank you, Aradhya. So the people who have read, just tell me, how did you feel while reading? And after your reading, how did you all feel? Ma'am, sir, we get to understand what are the feelings, and we get that success is something which can turn your signature into autograph. Haji, but I'm not fair enough. I'm asking about your experience of reading, not what you read, your experience of reading. Sir, it was joyful, sir. Same, sir. So, can I? Yes. I felt nice, excited, and a bit nervous, and I'll try more and make my reading skills get succeed. Thank you. And how will that happen? By practicing reading. Sir, I want to share my experience. Go ahead. Sir, I was curious and excited while reading. Good. Yes. It's very good that you're all volunteering. But as Ayan said, that we all need to practice, and it's only practice
and which will help us read as well as Brinda ma'am read. Right? Do you all agree she reads really, really well? Yes, sir. So that's the sort of, that should be our goal, how to get there. And it's about practice. So hopefully next time her, you know, uh, connection will be better and we'll ask her, we'll talk to a little bit more about how to read well. Okay. So now, who else wants to read? Sir, me. Kshitij, okay, go ahead. In today's Good School session, we had a wonderful book reading experience where Jugjiv sir beautifully explained the chapter. Here are the key takeaways from the session. The story revolves around Karl, a book delivery man, and Shashka, a young girl who accompanies him. We learned about Karl's habit of giving literary name to his customers. The chapter explores the theme of puberty and how it affects relationship between boys and girls. There is a discussion about Simon pushing Sashka with the various interpretations of his behavior. Shashka's idea of giving personalized book to customers had positive impact on Mr. Longstocking. We were introduced to Mrs. Longstocking backstories, including her fear of going outside. We also learned about Hercules, a customer who can't read but still orders books. This story touches on oncoming fears shown by Mrs. Longstocking's decision to step outside her home. A humorous moment occurs when Carl forgets Mrs. Longstocking's real name, showing how nicknames can overshadow real identities. Overall, this session taught us valuable lessons about empathy, fear, identity, and the power of books. By Thanks, Akash Agrawal. thanks. Yes, Manisha ma'am. Sir, shall I read? Arav again, okay, we can come back to you if there's nobody else who's volunteering. Anybody else? We have May Divyansh. I? Garima, okay, go ahead, Garima. My, my good school is a really special online community that meets every Sunday. It's open to everyone and is all about helping people discover their hidden potential and change their future for the better. Each session is limited to 100 people live. And if you can't make it, no worries. You can always catch the recording later on YouTube. The organization, the organizer, Sandeep Dutt, explained that the limit is due to logistics and costs, so it's important to join on time to get a spot. If you are late, you might have to wait until next week's session. We had a great conversation about Shika Aginotri ma'am's session, where she explained puberty in such a clear and caring way. It really helped everyone understand the tricky topic. We also talked about the story of a guy who tried to sell books door to door. At first, it was really hard. People ignored him or just said no. I can only imagine how discouraging that must have felt. But he did not give up. He truly believed in the books he was selling and wanted to share them with others. Slowly, some people started listening and even bought books from him. The part of the story really struck me with me. How important it is to keep going even when things get tough, and how passion and patience can make a real difference. Then there's Mr. Locke's Stockings, a woman who hasn't left her house in years because she's been scared even ever since her husband passed away. Carl and Sascha are trying to help her overcome that fear and step back out into the world. It's just a touching story about kindness and support. Overall, I had a great session today. By
A third, sh- Shara. Right. Yeah. So as you can see, the system has changed from that 100 limit to webinar, which has a 500 limit. But the challenge is what we're just trying to deal with just now, which is that you can't share a video and the process of how you can talk. So Manisha ma'am has suggested Divyanshu is next. So Divyanshu, please, is Aryan there, by the way? If you're there, please, you should just say I'm there and I'll read it myself. Okay, otherwise we'll get somebody else to read. So if Aryan is not there, Divyanshu, I had a suggestion. हाँ जी बताइए. Sir, I was saying that webinars are not so like they give us a really less features. Like we cannot even unmute ourselves on our cameras or even just simply chat, sir. Can you please, sir, go back to meetings, sir? But Kshitij, the challenge there is that as the schools have grown, then it being restricted to 100. That's the problem. So we're just trying. Jugjiv, may I just come in for a moment on Yes, this? yes. Please. Yeah. See, देखो, there were few of you in a small class of 25 in school. You are used to that, and your teacher connects with you, and you are happy. What if your class becomes 100 one day? Are you going to stop children from coming to your class? Now we face a challenge. Please go on mute. I'm just speaking. Yeah. So we face a challenge. Divyanshu, go on mute, Yes. yeah. See, this is the challenge. This is the challenge which will happen where too many people. Yeah. So we have 3 points we want to make very, very clear. One, we want to be available to one and all. We don't want to differentiate between people. You may have a good computer, good camera, good phone, and you can show your video. But there are a lot of people who don't have good access. Don't नहीं deprive सर, them बोल रहे हैं बच्चे, हम उनको and don't जिसने show their जिसने रेज different हैंड किया है उनको human. हम बोलने को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं. Unmute, Please mute mute the Manisha. person who's talking. Yeah. So I was trying to explain to you that we are a school for everyone. Your school can have a wall and limit people Yeah. coming in. We can't do that. That's the first thing. Second, no feature is lost. Child privacy is very important to us. That's why we would not want video to come on. And it is an intentional decision taken by the board that we should not have children visible without their consent. We don't have consent from everyone that we can share your data and your photo. So this is the second reason why we have become a webinar. And third, it's just discipline. We will have someone to let you in. That will never be a limitation at all. And all but not least, whenever change happens, is painful. So I'm sure we'll all settle down and we will understand how this is administered. But please understand, we have to look at greater good. When the government takes a decision, it takes it for greater good. And that is the whole story. So my good school is here for greater good. You have a point definitely when you say that you have more flexibility, more freedom, but also understand when 10 people unmute in a class of 100 or if 20 unmute in a class of 500, what will happen? Over to you, Jugjeev, sir. Yeah. Okay. Got it, So sir. Divyanshu, first get the people behind you to be quiet, then please Okay, read. sir. Okay, sir. Next, अच्छा. Yeah. Okay. Carl, the kind bookseller, bring warmth to every evening delivery. He noted small moments like a smile or sigh from his customers. Even after losing his job, he still cares deeply about people's stories. Books are not just objects, they connect heart and spark hope. On these pages, Carl meets someone new, a quiet moment of friendship. He feels a bit lost without his usual route, but he keeps walking. His destination shows that roots matter even when time changes. There's a gentle sadness, but also a quiet strength in his steps. The truth he builds with each people highlights the humankind.
we see human being together can heal loneliness and fear. The small action reminds us compassion and simple way matters. These lines encourage us to keep going even when we stumble. By R.N. Moody. Thank you. Thank you. Sir, I think you are muted. Your voice is not coming. My voice is not coming. Sir, now it is audible. Okay, thanks. Thanks. May I speak? 1 minute, 1 minute. And you've already read. Manisha, there was somebody else in chat who I can't unmute. I tried to go there and unmute, but I couldn't. Uh, somebody had their hand up. There are three hands up: Ananya, Roshni, Arav. Arav is red, so Ananya, Roshni, Okay, we Nisha, will allow Roshni. Please come in. You have been allowed to talk. Roshni. May I speak? Yes, please go ahead. You've been wanting for a while. Yeah, go ahead. The Door to Door bookstore is a heartwarming and quietly profound novel that reminds us of the power of connection, literature, and the second chances. At its core, it's not just a story about books, it's a story about people, their wounds, and the unexpected ways healing can begin. The Protagonist. protagonist Karl Koloff is an Aging. aging bookseller who delivers books on foot to his carefully selected clients. He is a man of quiet rituals wrapped in sol- solitude and shaped by the rhythm of stories. Each of his customers हाँ जी is सर unique, and though his and सर through मैं his उसी से तो visit, देख के कर रही हूँ we get a glimpse through into how literature हाँ can सर mirror and mend different kinds of loneliness. There's a beautiful metaphor here. Just as Carl delivers books to doorsteps, he also brings comfort and meaning to people's lives, often without fully realizing it. Manisha ma'am explained the chapter very well. I felt good listening to her explanation by Divyansh Agarwal. Thank you. Thank you. Who- We have another couple, I think, Manisha. Right? Is Nishchaya there? Okay. Who wants to read? Do we have volunteers, Manisha? Jugjiv, can we do some Hindi reading? We have IX lots of Hindi. double zero IX triple zero one. Who is IX triple zero one? Manisha, if you can't identify the name, don't unmute. Okay Simple sir. solution. Let's not. We need to use our time most efficiently. Garima. Yes, ma'am, may I read? Yes, please. Is your child ready to face the world? By Dr. Anupam Simbal is a guidebook for parents who want to raise strong and thoughtful children. Instead of focusing only on academic success, the book talks about the life skills kids need, like how to be honest, stay calm under pressure, treat others with kindness, and never give up. The author uses true stories to show how children learn best through real experiences and everyday situations. He emphasizes that parents don't need to be perfect.
but they do need to be present. By spending quality time with their kids and good model, parents can teach lessons that schools don't always cover. The message is simple: raise not just smart children, but good human beings. In today's fast moving world, values and emotional strength are just as important as knowledge. This book helps parents build that foundation, one small step at a time. By Good Nishchit show, Mohan. Garima. Good show, Garima. Good effort. Yep. जुगजीब, Uh, लेट्स रीड सम हिंदी. हम uh, इंग्लिश के साथ बहुत ज्यादा कर रहे हैं. sure, ये थोड़ा समय लग गया. I think we'll figure Now, this out as we time spent goes half an on. hour only on one post. We have so many other posts. Then we have the book to read also. Yeah, Flip, yeah, yeah. don't read So, every page. Just flip it. It's a very long presentation. So this yeah, is something very unique, written in okay. English, but actually in Hindi. बहुत अच्छा है. आप पढ़ा लो. Mandeep is there. Mandeep, are you there? Yeah, ये बहुत Mandeep raised अच्छा है. his hand. Just 1 minute. Where is Mandeep? Yeah, Mandeep is there. So, Sunbeam let's Lahar Tara. Allowed to talk. I've done that. Okay. Mandeep, please start. Mandeep, you are unmuted. Mandeep 90. टाइम. हर पेरेंट की. मनीषा प्लीज पढ़ दीजिए. वी हैव टू मार्शल टाइम. वी हैव जस्ट 120 minutes and we have 500 people. What are we getting at? Please Sure, read, sir. Manisha. Please read, हर Manisha. पेरेंट के जहन में एक सवाल अक्सर रहता है, क्या उन्होंने अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाई तक लिमिटेड रखा है, या उसे जीवन के कॉन्फिडेंस भी लेनी चाहिए, कॉन्फिडेंस भी लेने, चैलेंजेस का भी मुकाबला करने के लिए तैयार किया है। आज के जमाने में सिर्फ अच्छे मार्क्स लाना काफी नहीं है। बच्चों में कॉन्फिडेंस, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, इमोशनल स्ट्रेंथ और मॉरल वैल्यूज भी होनी चाहिए। ये क्वालिटीज उन्हें सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रहने देती, बल्कि उन्हें एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट इंसान बनाती है, जो हर मुश्किल का सामना कर सकती है। इसलिए जरूरी है कि बच्चों को एक बैलेंस अपब्रिंगिंग दी जाए, जहां वो सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि जिंदगी जीने का हुनर भी सीख सके, ताकि वो दुनिया के हर पहलू का सामना खुद मुख्तार तरीके से कर सके। वेरी वेल रिटन मंदी। yeah. थैंक यू। Jugjeev sir, हाँ जी. we are at the crossroads today. क्या ये नई ऑक्सफोर्ड की लैंग्वेज बन जाएगी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की? ये I सोचने think वाली so. बात है. जैसे हम कहते हैं कि एवोल्यूशन होती है, सिविलाइजेशंस बदलती हैं, और आप अक्सर सोचेंगे हमारी जो 90% कम्युनिकेशन हिंदुस्तान में व्हाट्सएप पे ऐसे ही हो रही है. सारे बिल्कुल. हिंदी के लोग हिंदी स्क्रिप्ट नहीं लिख रहे, परंतु हिंदी रोमन में लिख रहे हैं. तो हिंदी स्क्रिप्ट का क्या होगा, ये मेरा सवाल है आप लोगों से. No, अगले हफ्ते अमरदीप आएगा तो अमरदीप की जो लैंग्वेज उन्होंने यूज की है, एक है पंजाबी जो वहां पे बोली जाती है, पाकिस्तान में बोली जाती है, यहाँ पे बोली जाती है. उसके जी अलग अलग उस पे उसने की हुई है. और जो पंजाबी पाकिस्तान में बोली जाती है उसकी स्क्रिप्ट उर्दू में है, और इंडिया में बोली जाती है गुरमुखी स्क्रिप्ट है. जी. तो आपके पास एग्जाम्पल है. हाँ, वही. जैसे मैं ये आजकल बहुत सोचता हूँ, बिकॉज आजकल सारा दिन मुझे लोग मैसेज भेजते हैं, वो ऐसे ही लिखे होते हैं. हाँ. मतलब हिंदी तो कोई कीबोर्ड यूज ही नहीं करता. हिंदी कीबोर्ड का क्या होगा, बेचारा देवनागरी का क्या होगा. हम हिंदुस्तान में डिबेट कर रहे हैं कि हिंदी और तमिल, हम डिबेट कर रहे हैं भाषा. ये क्या हो गया? ऐसे ये तो डिसरप्शन आ गई ना. I want to share something very nice with all of you. This is known as disruption.
Yeah, Mandeep, that's okay. Don't worry. We accept what you did. We loved what you did. I It was can't type fun. Hindi in English keyboard. Yeah, perfect. I like that. You did the right thing. And we're actually appreciating and debating this beautiful thing you have done. And this is what has happened nationally in India. So I attended yesterday a metaverse meeting. Metaverse means that they Sir, stimulate the entire conference inside your screen. So when I went there, it was like a 3D gaming where one character was me and I could walk up to the stage, shake hands, and do everything in the presentation. So, in virtual reality and using AI, I think the disruption is here for education. Now, why I call it disruption? Two reasons why I call this disruption. Language will have no barrier. That will be the first thing. And second, we won't bother about standard tests because we all can learn ourselves and be ready to face the world. So my question to David Roberts, you can Google him. He was a very, very fascinating person. My question to him was, how will disruption happen in education and schooling in the world? He said, simple, standard tests will collapse. They will have no meaning. Testing will have no meaning, and this will happen very fast. Minute this testing business loses its steam, everyone will learn. And that's how. So what happens? Why should you take 11 years to learn what your school tells you learn in 11 years? You can do it in 11 months. Sir, He says, it this is is the disruption that. 11:39, but from 11:30 we have to start Hindi reading. या आई अप्रिशिएट दैट ये क्लासरूम है हम आप समझ रहे हैं हम हिंदी में आ गए हमने अभी हिंदी में पोस्ट पढ़ी है जो मैं आपको बता रहा हूं ये उससे भी आगे की चीज है आप केवल पढ़ने की बात कर रहे हैं मैं आपको बता रहा हूं कि दुनिया में क्या हो रहा है आप किताब में नहीं रहिए किताब से आगे चलिए ये मैं आपको समझा रहा हूं पढ़ तो आप सेशन के बाद भी सकते हैं खोल के परंतु जो चीज मैं आपको अब बताने जा रहा हूं या बता रहा हूं वो आपको बाहर नहीं मिलेगी और मैंने दो चीजों में समराइज करूंगा दूसरा भाषा का मतलब नहीं रहेगा सीखने के लिए जो भी सीखना चाहता है वो भाषा के बिना भी सीख सकता है एक और दूसरी चीज टेस्ट का मतलब नहीं रहेगा और ये अगले हाल ही में होगा कि टेस्टिंग की लोग बॉदर ही नहीं करेंगे आप एग्जाम में ही नहीं बैठेंगे मैंने सीख लिया मुझे एग्जाम क्या करना है कोई एग्जाम के सर्टिफिकेट से मुझे नौकरी थोड़ी मिल जाएगी ओवर टू यू जुगजीत सर दैट्स द डिसरप्शन Interesting thought. But the question is how, because after school, you get into college, how college will choose people. That's the first question I have. How will college decide I'll whom to answer take? that. Bill Gates didn't go to college. Einstein didn't bother about college. So You'll you're get an studying, so yeah. you're just studying, and eventually, based on Most skills. of the inventions and discoveries were not made by college graduates. It was made on the basis of need, even during the Middle Ages. Yeah, Jugjeev, even the tribals today, they have an answer for every sickness. But the pharma industry will not let you use their answer for every sickness. So now with the exponents, for example, tomorrow Starlink comes where everyone can get connected to the knowledge base and internet. Today we only reach about 20-25% of our population. We don't still reach most of our population due to lack of connectivity and good bandwidth. So what I'm explaining is that disruption will happen when people will take learning in their own hands. And that's where your neocortex will grow outside your head, where you will have knowledge available on the tap. That's what will happen. And when knowledge is available on a tap, you won't need to store so much knowledge. And as you won't need to store so much knowledge, you will focus on what, for example, you may be drawing. So you will focus on drawing all your while. And if you want to know something, you can tap and fill yourself up. That's how it will go. So these are very futuristic things. So Manisha, over to you. Please go ahead and read your chapter. Okay, I'm going to take off. See you all next week. Thank you. I Bye. hope people enjoyed this little peek into the world ahead. And I encourage you to do this yourself. You don't have to come to my good school. You can actually do all these things yourself. And I'm saying that apne pair pe kuladi maar raha hoon. That's okay. It doesn't matter. As long as we can guide you to the guiding light, we are successful. Over to you, Manisha. Before I start, I just want to tell everyone, Dreamtime Learning जो है आपका एक story writing competition कर रहा है.
Last time also we have announced this, and today also I'm telling you the same thing. So last date to submit is on 19th of July. But before that, you need to register yourself. जब तक आप registration नहीं करेंगे, आप story writing competition में part नहीं ले सकते. Winners will be announced Dreamtime Learning के website में, and after that there will be a publishing course that starts from 9th of August. आप उसमें क्या सीखेंगे? आप सीखेंगे उसमें steps to write a story, और ये 10 वीक्स का कोर्स है, विच विल हैपन फ्रॉम एवरी सैटरडे 11 से 12:30 बजे. इट इज 11 to 12:30 PM. दैट्स द टाइमिंग. जूम लिंक इज गोइंग टू बी प्रोवाइडेड. उस जूम लिंक के थ्रू आप कर सकते हैं, एंड आपके स्कूल आपको अलाउ करेंगे इसको करने के लिए. सो वी आर जस्ट हैविंग अ वर्ड विथ यू. सो सबसे पहली चीज क्या करनी है, आप सबको रजिस्ट्रेशन करना है, और एक स्टोरी आपको हमें लिख के भेजनी है. द स्टोरी शुड बी फ्रॉम 300 to 500 words. 300 से 500 वर्ड में आपकी ये स्टोरी होनी चाहिए. So I believe this part is clear with everyone. Ma'am, what is the topic for this story? बेटा आप स्टोरी का टॉपिक कुछ भी ले सकते हैं, टॉपिक आपके ऊपर है. नॉट रिक्वायर्ड कि आपको कोई हम टॉपिक देंगे. कंपटीशन है. आपके टीचर्स आपको दे देंगे लिंक जहां पे रजिस्टर करना है. वी हैव ऑलरेडी पोस्टेड एंड विल रिक्वेस्ट ऑल द स्कूल्स टू गिव इट टू यू. नाउ बिफोर आई स्टार्ट, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू म्यूट योरसेल्फ, क्योंकि मैं आपको बार बार. I have doubt. हाँ जी बेटा, प्लीज म्यूट कर लीजिए, देन आई विल बिगिन विद माय क्लास. Ma'am, I was saying that. Ma'am, Meta, please mute yourself, बेटा. Yeah, thank you so much. Manisha, is the quality of audio good? Sir, Is the quality of audio good now? Ma'am, your mic is off. Manisha, please put on your mic. ओके. सो लास्ट टाइम हमने असफलता के बारे में चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें हमें ये बताया गया है कि हमें असफलता से हमेशा परेशान नहीं होना चाहिए. तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एक सबक लेना चाहिए कि किस तरीके से हम असफलता को पीछे छोड़ के सफलता के पास पहुंचे. तो अब इस बार एक छोटा सा मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया है कि किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे. सबसे पहले तो हमें एक सपना देखना चाहिए, और उस सपने को पूरा करने के लिए हमें एक डेडिकेशन होना चाहिए. जब हम सपने को देखते हैं, डेडिकेटली उससे आगे बढ़ते हैं, तो हमें रास्ते अपने आप मिल जाते हैं. जब तक हम रास्ते पे नहीं चलेंगे, हमें गूगल मैप भी कोई हेल्प नहीं करने वाला है. तो वो रास्ते पे हमारी डिटर्मिनेशन, हमारी बातें हमें समझाएगी कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है. और ये सब चीज कैसे पॉसिबल है? ये सब चीज पॉसिबल है आपके अंदर के ड्राइव से. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू अचीव. हमारा आज का टॉपिक है देने का जज्बा. सो किस तरीके से हम दे सकते हैं लोगों को, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू रीड टुडे. Joy of giving. जॉय ऑफ गिविंग. जब ईश्वर तुम्हें आर्थिक रूप से संपन्नता का आशीर्वाद दे, तो अपने जीने का स्तर ऊपर उठाओ, अपने देने का स्तर ऊपर उठाओ. इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि हम में से बहुत से लोग बहुत संपन्न होते हैं. वी आर लाइक वेरी रिच. हमारे पास विद द हेल्प ऑफ गॉड बहुत सारी चीजें होती हैं, तो क्यों ना हम उन चीजों को, कुछ कुछ चीजें दूसरों को डोनेट करें. पैसों से डोनेट कर सकते हैं, हम सामान ला के उन्हें दे सकते हैं, एंड जरूरी नहीं है ये सब करें, हम श्रम दान भी कर सकते हैं. तो अगर हम रिच है, वी कैन बी रिच इन एनीथिंग, विद आवर इंटेलिजेंस, विद आवर मनी, विद आवर एटीट्यूड, विद द क्वालिटी ऑफ लिविंग लाइफ. हमारी जो रिचनेस है उसको हम किसी न किसी तरीके से
दूसरों को दे सकते हैं। 2009 की फोर्ब्स बिलियनियर्स सूची अभी घोषित की गई थी। जब हम खबर सुन रहे थे, देवांग बोला, हर साल वही कहानी होती है, फिर से बिल गेट्स ही दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। कितना उबाऊ है ये सब। हाँ, जहां एक और वे इस धरती के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, वही क्या तुम ये जानते हो कि दूसरी ओर वे ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्होंने दूसरों की तुलना में सेवा और दान के लिए सबसे ज्यादा दिया भी है। उनका फाउंडेशन जिन प्रोजेक्ट्स का समर्थन करता है, उसका निरीक्षण करने वे अक्सर भारत आते हैं। वह हमेशा ही दूसरों को देने के अवसरों की तलाश में रहते हैं। क्या तुम बिल गेट्स के बारे में जानना नहीं चाहोगे? एक ऐसे व्यक्ति जिसमें हमारे जीने के तरीके को ही बदल दिया। मैंने पूछा, इस आशा से शायद देवांग हाँ कहे। शायद मैं जानना चाहूं, क्योंकि यदि वह नहीं होते तो आज हमारे पास विंडोज नहीं होता। इस तरह हम पिता पुत्र फिर से एक और शोध कार्य में जुट गए और हमें व्यस्त रखने के लिए हमें बहुत कुछ मिला। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना करने के लिए बिल गेट्स ने अपना पूरा कोर्स पूरा किए बिना ही हॉवर्ड छोड़ दिया। 31 साल की उम्र में वह दुनिया के सबसे कम उम्र के स्वनिर्मित अरबपति बने। उनके नेतृत्व में माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे सफल कॉरपोरेशन बनी। 1998 में वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए और तब से 2010 और 2011 को छोड़कर उस पदवी पर निरंतर बने हुए हैं। 2014 में उनकी मिल्कियत 81.5 अरब डॉलर थी, $81.5 अरब। 64 साल की उम्र में उनकी मां की स्तन कैंसर के कारण असमय मृत्यु हो जाने के बाद बिल गेट्स ने ऐसी संस्थानों की स्थापना की जो उन मुद्दों को संबोधित करती थी और उनकी मां के दिल के करीब थे। जब गेट्स शादी कर रहे थे, तब उनकी मां ने उनकी दुल्हन मेलिंडा को लिखा था, जिन्हें बहुत कुछ दिया जाता है, उससे बहुत कुछ की आशा भी की जाती है। 2000 में मेलिंडा के साथ गेट्स ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की स्थापना की। गेट्स फाउंडेशन 100 से अधिक देशों में और यूएस के हर राज्य में शिक्षा, कृषि, वित्तीय सेवाओं, सूचना प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य परियोजनाओं का समर्थन करता है। यह ध्यान लेने ये ध्यान देने लायक बात है कि सबसे अधिक राशि का आवंटन स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुआ है, वह भी टीकाकरण के प्रचार के लिए। पोलियो को जड़ से खत्म करना गेट्स के लिए एक मिशन बन गया। तो इस चैप्टर में हमें ये बताया गया है कि देने का जज्बा क्या होना चाहिए। Manisha अगर ma'am, हमें गॉड 1 second. A child is saying, please read slower. ओके, हमें भगवान ने, हमें गॉड ने जब इस काबिल बनाया है, तो हमें ये भी आगे देखना चाहिए कि उस काबिलियत को हम किस तरीके से जॉय ऑफ गिविंग के साथ हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो जब तक हम जो चीज हमें मिली है वो हम दूसरों के साथ, दूसरों को हेल्प नहीं करेंगे, दूसरों के साथ शेयर नहीं करेंगे, तो हमें वो खुशी अंदर से नहीं मिलेगी। तो ये अंदर की खुशी पाने के लिए एक ही चीज जरूरी होती है, और वो होती है देना, शेयर करना। शेयरिंग इज केयरिंग, ये सब आप बचपन से जानते हैं। एंड आप में से बहुत से बच्चे शेयर करते भी हैं, क्लास में अपने शेयर करते हैं, स्टेशनरी शेयर करते हैं, नोटबुक शेयर करते हैं। बट लाइफ यहाँ तक नहीं है। खाना, नोटबुक, स्टेशनरी सब शेयर करते हैं। बट आपके घर में जो सर्वेंट्स आते हैं, उनको अगर आप पढ़ा दो, थोड़ा सा आगे उनको बढ़ा दो, उनको नंबर्स बता दो, दैट विल बी ट्रू हैप्पीनेस फॉर यू। 2014 तक बिल और मेलिंडा 30.1 अरब यूएस डॉलर दान कर चुके थे। प्रशंसनीय बात यह है कि उनकी संपत्ति का 95% उनके फाउंडेशन के लिए सुरक्षित है, जो उनके गुजर जाने के 20 साल के अंदर सारा पैसा खर्च कर देगा। गेट्स ने एक बार एक साक्षात्कार में कहा था, एक हद के बाद पैसों मेरे लिए कोई उपयोग नहीं है, पैसों का मेरे लिए कोई उपयोग है ही नहीं। क्योंकि वो इतना ज्यादा कंटेंटेड थे, इतना ज्यादा दे करके वो खुशियां बटोरना चाहते थे कि वो अपने लिए कुछ भी नहीं रखना चाहते थे, वो सब कुछ दूसरों की हेल्प के लिए रखना चाहते थे।
इसका पूर्ण उपयोग एक संस्था को बनाने और दुनिया के सबसे गरीब लोगों तक संसाधन पहुंचाने में है। 2007 में हार्वर्ड के अपने प्रसिद्ध शुरुआती भाषण में उन्होंने कहा था कि इस फाउंडेशन की परिकल्पना उन्होंने तब की थी जब उन्होंने सोचना शुरू किया, हम अपने संसाधनों से अधिकतम लोगों के लिए सबसे अच्छा काम कैसे कर सकते हैं। वॉरेन बफे और बिल गेट्स 1991 से मित्र रहे हैं। सन 2000 से बुफे दुनिया के 4 सबसे अमीर लोगों में से एक थे। 2006 में उन्होंने एक नाटकीय घोषणा की कि वह अपने वर्कशायर हैथवे स्टॉक का 85% दान के लिए दे देंगे। दिव्यांश, प्लीज गिव मी अ मिनट, लेट मी फिनिश दिस, देन आई विल सी। जिसमें से अधिकतर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को दिया जाएगा। 2014 तक बफे ने 17 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक राशि गेट्स फाउंडेशन को उपहार स्वरूप दे दी थी। जो बात बफे की उदारता को असाधारण बनाती है वह ये तथ्य है कि उन्होंने अपने नाम से मानव कल्याण हेतु दुनिया की सबसे बड़ी संस्था बनाने की बजाय अपना पैसा एक सुस्थापित सेवा संस्था को देने का निश्चय किया। गेट्स और बफे ने मिलकर द गिविंग प्लेस नामक संस्था बनाई है। 2009 में बनाई गई ये संस्था विश्व भर के धनाढ्य व्यक्तियों को अपने पैसे मानव कल्याण हेतु प्रतिबद्ध करने के लिए प्रोत्साहित करती है। 2014 तक 127 अरबपति व्यक्ति प्रतिबद्धता पर हस्ताक्षर कर चुके हैं और उन्होंने मिलकर 200 अरब यूएस डॉलर अधिक की राशि प्रतिबद्ध की थी। अजीम प्रेमजी विप्रो के अध्यक्ष ने 2.3 अरब यूएस डॉलर प्रतिबद्ध किए और भारत में सबसे अधिक योगदान देने वाले व्यक्ति बने। जहां एक और बिल गेट्स, वॉरेन बुफे और अन्य अरबपतियों की उदारता प्रशंसनीय है, वही दूसरी ओर यह प्रश्न उठता है कि क्या उदार होने के लिए अमीर होना आवश्यक है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे मैं आप सबकी राय जानना चाहूंगी। आप प्लीज टेक्स्ट बॉक्स पे लिखिए कि उदार होने के लिए अमीर होना आवश्यक है कि नहीं। क्या आप पैसों से ही सबकी हेल्प कर सकते हैं या उसके बिना भी हेल्प कर सकते हैं? आप चैट बॉक्स में प्लीज लिखें। अगर आप पैसे के बिना हेल्प कर सकते हैं तो आप नो लिख दीजिए। अगर आप पैसे के साथ हेल्प कर सकते हैं तो आप यस लिख दीजिए। आसान हो गया ना मनीषा मैम? ये कह रहे क्वेश्चन नहीं समाधि आया। आशवी आपको बेटा, जब मैम दूसरों ये की पूछ हेल्प रही हैं करनी है क्या तो किसी को हेल्प करने के लिए पैसा जरूरी है? आशवी को थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी हमारे साथ और हमको उसके साथ। आशवी मैम एक कहानी सुना रही हैं बिल गेट्स की, जो दुनिया के सबसे अमीर सज्जन हैं इस समय में जब किताब की डेट है। अब कोई और है सबसे अमीर सज्जन? ये किताब पहले लिखी थी। मैम ये पूछ रही हैं क्या किसी को हेल्प करने के लिए पैसा जरूरी है? क्या आप हेल्प कर सकते हैं पैसे के बिना भी? यस और नो, ये है सवाल। मैम कोई बोथ कह रहा है, कोई कह रहे, दो कह रहे हैं नो, सो नो इज द स्ट्रॉन्गर वन। मैंने वोटिंग ले ली आपके लिए। गरिमा फ्रॉम पीवाईडीएस सेज नो, फॉर हेल्पिंग मनी इज नॉट इंपॉर्टेंट। वेरी ब्यूटीफुल, पूरा तो हम सेंटेंस लिख दिया। बिना पैसों के हेल्प कैसे कर सकते हैं लोगों को? दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हमारा बिना पैसे के हेल्प करना चाहते हैं तो हम कैसे हेल्प करेंगे? आप प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए। आप चैट बॉक्स में सजेशन दें कि अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं, आप, और आप कह रहे हैं आपको पैसे की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा लिखा, सपोर्टिंग देम। और आपके पास जो भी पैसा है आप उसके साथ यूज कर सकते हैं। ये देखो, ये और भी अच्छा लिखा। ज्यादा और कम की बात ही नहीं हो रही। कहते हैं हम स्टूडेंट्स को टीच कर सकते हैं बिना पैसे के। देखो और अच्छा, देखो मनीषा मैम, ऐसे ही यहाँ आविष्कार हो रहे हैं जो कह रहे हैं हम बच्चों को टीच कर सकते हैं। और यही चीज मैं आज थोड़ी देर पहले आपको समझा रहा था कि आपको स्कूल की जरूरत नहीं पड़ेगी, टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर
आपके पास ड्राइव, डिटर्मिनेशन, मनीषा मैम, मैं आपके स्लोगन पे आ रहा हूं। अगर आपके पास ड्राइव डेडिकेशन, है, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन है, डेडिकेशन है, आपको और कुछ नहीं चाहिए। ड्रीम, डेडिकेशन, डायरेक्शन। अब देखो, बहुत अच्छा कह रहे हैं आप, किसी को फूड दे सकते हो, किसी को मोटिवेशन दे सकते हो, ठीक है, आप अपना टिफिन टिफिन बॉक्स शेयर करो। मैं ये बहुत एग्जाम्पल देता हूँ आपको बच्चों को। जब आप केजी में स्कूल जाते हैं, आप 4 साल के होते हैं, तकरीबन 3 के भी होते हैं, 5 के भी होते हैं। तो सबसे पहले जब आपकी मम्मी का टिफिन बॉक्स आप लेके जाते हैं, आप शेयर करते हैं उसको, और वहां से आप गिविंग सीखते हैं, और आपको शेयर करने में बहुत अच्छा लगता है। फिर आप किसी को अपनी पेंसिल दे देंगे, किसी को अपना रबड़ दे देंगे, तो उसमें तो बिल गेट्स की जरूरत नहीं है ना। तो जो आपके पास है, ये ना सोचिए कि जो आपको नहीं चाहिए। जो आपके पास है और जो आप दिल से किसी के साथ शेयर कहते हैं, उसको कहते हैं गिविंग। अगर आप किसी को ऐसी चीज देंगे जो आपको नहीं चाहिए, आपको भी पता है, आपके दिल को भी पता है, क्या वो गिविंग है? भी आयुष ने बहुत ही अच्छा लिखा है, यू कैन ऑफर योर टाइम एंड स्किल्स थ्रू जी जी। वॉलंटियरिंग, डोनेट gentle use items, share knowledge, or simply offer emotional support. Yes, EQ, emotional question is very much important, and वो तभी होगा जब आप लोगों को सपोर्ट करना चाहेंगे। तो सपोर्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है, और सबसे ज्यादा जरूरी है लिसनिंग एंड काइंडनेस। यस, एम्पैथेटिक लिसनर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जब तक आप एम्पैथी लिसनिंग में नहीं लाओगे, नेचुरली यू विल नॉट बी एबल टू हेल्प पीपल। सुनते हम सबकी है, पर जी, लिखते समझते रहेंगे उनकी आप, बात इनको कम। लिखने दीजिए, आप आगे पढ़ लीजिए, नहीं तो चैप्टर छूट Yes, जाएगा। I was about to. Okay, जॉर्ज मुनोज कोलंबिया का अप्रवासी है जो न्यूयॉर्क में रहता है। अप्रवासी मीन्स नॉन नेटिव। दिन में तो वो स्कूल बस चलाता है, लेकिन शाम को उनके एक और भी महत्वपूर्ण काम लिया हुआ है। वह क्वींस के मकान बनाने वाले भूखे मजदूरों को खाना खिलाता है। मुनोज खाना खिलाने की योजना बनाने के लिए सवेरे 4:45 पर उठता है। जब वह काम से लौटता है तो अपने ट्रक में वह सारा खाना भरता है, जो उसकी माँ बनाने में उसकी मदद करती है। रात 9:30 वह दर्जनों मजदूरों को खाना बांटता है। इस काम में वह हर हफ्ते $200 खर्च करता है, जो कि उसकी कमाई का 1/3 भाग है। मजदूरों को रोज खाना खिलाने के इस मिशन के कारण उनके पास अपने दोस्तों, रुचियों और खाली समय के लिए वक्त ही नहीं बचता। जब उससे पूछा गया कि इसके लिए उसे प्रेरणा कहाँ से मिलती है, तो वह बोला, मैं जानता हूं कि वे लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं और मुझे उनकी चिंता रहती है। तुम्हें उनके चेहरे की मुस्कान देखनी चाहिए। बस इसी तरह मेरे किए की कीमत मिल जाती है। अगर उनका देवदूत मुनोज नहीं होता, तो दर्जनों मजदूरों को ये पता नहीं होता कि उनका अगला भोजन कहाँ से आने वाला है। पी कल्याण सुंदरम, जिन्हें भारत का सर्वश्रेष्ठ लाइब्रेरियन के रूप में जाना गया है और जो विश्व के 10 सर्वश्रेष्ठ लाइब्रेरियन में से एक थे, एक प्रशंसनीय जीवन जीते थे। जब भारत 1962 में युद्ध में लगा हुआ था, तब वह कॉलेज में पढ़ते थे और वे अपनी सोने की चेन दान में देना चाहते थे। मुख्यमंत्री ने उन्हें ये कहकर वापस भेज दिया कि कोई ऐसी चीज दान में दो जो तुमने खुद कमाई हो। इस घटना ने उनके किशोर मन पर गहरी छाप छोड़ी। 35 साल तक वह जरूरतमंदों को मदद करने के लिए अपनी पूरी तनख्वाह दान करते रहे। अपनी रोज की जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने दूसरे छोटे मोटे काम किए। पालम उनके द्वारा स्थापित संस्था है जो दान और योगदान इकट्ठा करती है और जरूरतमंदों में बांटती है। एक बाल रोग चिकित्सक होने के नाते मैंने अपने अनुभव से दूसरों को दान के दिल को छू देने वाले प्रकरण देखे हैं। निहाल उपाध्याय को जब मैंने पहली बार देखा, तो वह सिर्फ 9 महीने का था। उसे हमारे पास गुवाहाटी से भेजा गया था। उसके लीवर में सूजन थी। जीवन के शुरुआती कुछ क्षणों में ही उसे पीलिया हो गया था।
पिलियस जॉन्डिस और उसके लीवर में धब्बा पड़ गया था, जिसे सिरोसिस कहते हैं। निहाल के लिए एकमात्र इलाज था लीवर ट्रांसप्लांट। निहाल की बुआ एक उचित डोनर प्रतीत हो रही थी। परिवार ने तो बच्चे को बचाने के लिए दृढ़ संकल्प लिया हुआ था, लेकिन उन्होंने ट्रांसप्लांट के लिए राशि जुटा पाने में असमर्थता जताई। हॉस्पिटल और क्लिनिकल टीम खुशी खुशी मुफ्त में ट्रांसप्लांट करने को तैयार थे, लेकिन फिर भी दवाइयों और अन्य खर्चों के लिए पैसे चाहिए थे। मैंने एक टीवी चैनल से दान के लिए अपील को प्रसारित करने का निवेदन करने का निश्चय किया। अगले दिन मेरे पास भूतपूर्व क्रिकेटर, टीवी कमेंटेटर और होस्ट नवजोत सिंह सिद्धू का फोन आया और उन्होंने मुझसे पूछा कि हमें कितने रुपयों की आवश्यकता है। मैंने उनसे कहा, कृपया आप जितना उचित समझे दे दें। नवजोत ने हमें 18 लाख रुपए का चेक भेज दिया, जिसमें से 6 लाख रुपए इस्तेमाल हुए और बाकी के 12 लाख को फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया गया। उस पर मिलने वाले ब्याज से निहाल के लिए जरूरी एंटी रिजेक्शन दवाइयों का खर्चा पूरा किया जाता है। नवजोत को प्रचार नहीं करना नहीं चाहिए था। जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए उनसे मिले तो उन्होंने कहा, जब भी कोई परिस्थिति आए आप मुझे जरूर फोन करें। आने वाले सालों में मैंने ऐसे अनेक लोगों को देखे हैं जो जरूरतमंद परिवार की मदद करने के लिए आगे आते हैं, और अक्सर वे वे लोग होते हैं जो इन परिवार में से कभी मिले तक नहीं होते, और शायद वे उनसे कभी मिलेंगे भी नहीं। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो गुप्त दान करते हैं। वो फ्रंट में नहीं आना चाहते, वो सिर्फ हेल्प करना चाहते हैं, और वो चाहते भी नहीं कि उनके बारे में लोगों को पता चले। उनका बिना किसी मान, प्रशंसा या कृतज्ञता की अपेक्षा किए दूसरों को देने का जज्बा ही उन्हें विशेष या खास बनाता है। पारुल तुली, शोना नाथ और जैस्मिन चड्डा ऐसे ही 3 लोग हैं। जब ऐसा कोई प्रकरण आता है जहां वित्तीय सहायता की आवश्यकता होता है, वित्तीय मीन्स मॉनिटरी, तो मुझे बस इन लोगों को फोन करना होता है और उपचार संभव कर दिया जाता है। तीनों की इच्छा है कि वह उन बच्चों की मदद करे जिनके पास संसाधन सीमित है और जिन्हें लीवर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है। वे उस दुर्लभ प्रजाति के लोग हैं जो मात्र देने के इरादे से देते हैं, न इससे कुछ ज्यादा न इससे कम। बच्चे आमतौर पर उदार होते हैं। सर्दियों की छुट्टियों में नंदिनी, देवांग और मैं नंदिनी की बहन प्रीति और उसके 14 साल के बेटे दिविज के साथ एक दिन बिताने गए। नंदिनी, प्रीति और मेरे पास तो बहुत समय था, लेकिन दिविज के पास बिल्कुल समय नहीं था, क्योंकि उसे अपना एक जिम्मेदारी पूरी करनी थी। उसे और उसके दोस्त जरूरतमंद बच्चों को बढ़िया खाना खिलाने में व्यस्त थे। पिछले कई हफ्तों से दिविज और उनके दोस्त आस पड़ोस से चंदा इकट्ठा कर रहे थे और अपने पॉकेट मनी में से बड़ी उदारता से पैसे डाल रहे थे। उन्होंने 10,125 रुपए इकट्ठे कर लिए थे। एक हफ्ते बाद जब हम उनसे मिले तो दिवजी ने अपने अनुभव के बारे में हमें बताया। पहले उनका इरादा 200 बच्चों को भोजन कराने का था, लेकिन क्योंकि उन्हें बहुत ही अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी, उन्होंने 326 बच्चों को भोजन कराया। कुछ बच्चे बहुत ही छोटे थे और खुद नहीं खा सकते थे। उन्होंने उन बच्चों को अपने हाथों से खाना खिलाया। मैंने दिविज से पूछा, तुम्हें ये विचार आया कैसे? दिविज ने बताया, दिवाली से 2 दिन पहले माँ और मैं पटाखे खरीदने जा रहे थे। हमने एक खाने के स्टॉल के पास 2 बच्चों को देखा जो कि भूखे लग रहे थे। माँ ने सुझाव दिया कि मुझे उनके लिए खाना खरीदना चाहिए। जब वे 2 बच्चे खा रहे थे तो और भी बच्चे उस खाने के स्टॉल के पास आ गए और एक प्लेट छोले कुलचे के लिए पंक्ति बनाकर खड़े हो गए। डिसिप्लिन देखो, उन्हें चाहिए खाना, भूख भी लग रही है, पर वो सामने से नहीं बोले और पंक्ति में लाइन अप होकर के खड़े हो गए। सो उनको खाना खाना था, तो इस तरीके से वो बच्चे आगे आगे 1 घंटे के अंदर मैंने 62 बच्चे, 62 is 62, मैंने 62 बच्चों को खाना खिला दिया।
हालांकि मैंने पटाखे के लिए दिए गए रुपयों का 1/3 भाग खर्च कर दिया था, मुझे एक अजीब सी संतुष्टि का आभास हुआ। तो यहाँ पे राइटर ये कह रही है कि 1/3 इज 1/3। सो जो भी उनका पैसे उनको क्रैकर्स के लिए यूज करने थे, उसका 1/3 पार्ट उन्होंने कहाँ पे यूज किया? वो किया लोगों को जॉय ऑफ गिविंग के लिए, हेल्प करने के लिए। तो खाना खिलाने के बाद उनको जो संतुष्टि मिली, दैट वाज वेरी नाइस। वो एक अलग ही फीलिंग होती है जो आप जब देते हो किसको तभी आपको मिलेगी, वो शब्दों में हम व्यक्त नहीं कर सकते। मैंने निश्चय किया कि क्रिसमस के आसपास मैं कुछ और बड़ा आयोजन करूंगा। मैंने अपने दोस्तों से बात की और हमने मिलकर ये आयोजन करने का निश्चय किया। अब हम इसे 4 साल में 4 बार करेंगे। उनके चेहरों की चमक देखकर और उनके उत्साह को सुनकर मैं समझ गया कि एक 14 साल के बच्चे ने देने के आनंद को ढूंढ लिया है। इस बात के प्रमाण बढ़ते जा रहे हैं कि दान देने वालों के लिए सचमुच लाभकारी होता है। शोध से पता चला है कि दयापूर्ण कार्य शरीर में सेरोटोनिन की मात्रा को बढ़ाता है, जो कि एक न्यूरोकेमिकल है जो अवसाद को दूर करता है। सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ने से मन स्थिति अच्छी हो जाती है और घबराहट कम होती है। कार्यकारी एमआरआई स्कैनों से मस्तिष्क के वह भाग जो पैसा मिलने पर सक्रिय हो जाते हैं, वह भाग पैसा देने पर और अधिक सक्रियता दिखाते हैं। तो कितनी ब्यूटीफुली यहाँ पे लिखा हुआ है कि जॉय से सिर्फ हमें इनर सेटिस्फैक्शन नहीं होती है, हमारे ब्रेन में भी कुछ कुछ वॉकिंग टॉकिंग एंड शाउटिंग स्क्रीमिंग स्टार्ट हो जाती है, जिससे हम समझते हैं कि यस, हमने कुछ बहुत ही अच्छा किया है। क्रिस्टिन कार्टर पीएचडी यूसी बर्कलेज ग्रेटर गुड साइंस सेंटर में सोशियोलॉजिस्ट और हैप्पीनेस विशेषज्ञ हैं, जिनका उद्देश्य है प्रगतिशील उत्थान की ओर अग्रसर और संवेदनशील समाज के लिए कौशल की शिक्षा देना। एक लेख में जिसका शीर्षक था What we get when we get give, what we get when we give, वह लिखती हैं कि जो लोग स्वयं सेवकों का काम करते हैं उन्हें कम दर्द वो पीड़ाएं होती हैं। जो लोग सेवा के कार्य में लगे हुए हैं उनको देखने मात्र से भी शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली में इम्यूनोग्लोबुलिन एक महत्वपूर्ण एंटीबॉडी का स्तर बढ़ जाता है। स्टीफन पोस्ट Why Good Things Happen to Good People के सह लेखक एक बहुत अच्छी सलाह देते हैं। तनाव से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है किसी और की मदद करना। टॉम रैथ और जिम हॉटर के एक प्रयोग में जो कि वेल बीइंग द 5 एसेंशियल एलिमेंट्स में प्रकाशित हुआ था, कुछ लोगों को खर्च करने के लिए पैसे दिए गए। भाग लेने वालों को ये कहा गया कि उन्हें ये पैसे अपने निजी वस्तुओं पर किसी को उपहार देने के लिए या दान में देने के लिए खर्च करना है। जिन भाग लेने वालों ने उपहार देने के लिए या दान देने के लिए पैसे खर्च किए, उन्हें अपने स्वास्थ्य में सुधार का अनुभव हुआ। इसके विपरीत जिन्होंने खुद पर खर्च किया, उन्हें यह अनुभव नहीं हुआ। हाल हम में से अधिकतर लोग भौतिक इच्छाओं और मनोरंजन के पीछे भागने में इतने व्यस्त हैं कि हम भूल जाते हैं कि जो सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी ने कहा था, क्योंकि देने में ही हम प्राप्त करते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि हमारे बच्चे भी और अधिक की चाह में हमारा ही अनुसरण करते हैं। हमारे बच्चों को हमें बिना किसी अपेक्षा के देते हुए देखना चाहिए, बिना किसी को जाने देते हुए देखना चाहिए और देने के आनंद की खातिर देते हुए देखना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तभी वे हमारा अनुसरण करेंगे। हमें अपने बच्चों को कोई भी वस्तु, चाहे वो कोई किताब हो, खिलौना हो या फिर चॉकलेट, अपने से कम भाग्यशाली व्यक्ति को देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये कोई छोटी चीज भी हो सकती है। यही छोटी चीज आगे जाकर समय के साथ उन्हें कुछ बड़ा देने की ओर ले जाएगी। एक बार उन्हें देने के आनंद के बारे में पता चल जाए, फिर उन्हें थोड़े प्रोत्साहन की आवश्यकता होगी। मैंने ये देखा है कि देने में लड़कियों को कम कठिनाई होती है।
मेरे क्लिनिक में एक लड़की लगभग हमेशा ही अपने भाई के लिए एक अतिरिक्त कैंडी की मांग करती है। लड़कों को थोड़ी मुश्किल होती है। शायद प्रकृति ने लड़कों और लड़कियों को इसी तरह बनाया है। इसीलिए लड़कों के माता पिता को थोड़ा जल्दी ही शुरू कर देना चाहिए और उन्हें देने की कला सिखाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। देना न केवल एक सही काम है, बल्कि ये देने वाले की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। हमें याद रखना चाहिए कि महात्मा गांधी ने क्या कहा था। गुलाब देने वाले के हाथ में हमेशा ही सुगंध रहती है। हम अपने बच्चों को सर्वश्रेष्ठ उपहार दे सकते हैं। उनमें से एक है देने का आनंद। सब दो, सबका। M.K. गांधी। So this was today's chapter, जिसमें हमने सीखा जॉय ऑफ लर्निंग, जॉय ऑफ गिविंग क्या है। तो जब हम सीखेंगे, जब हमें जॉय ऑफ लर्निंग मिलेगा, हम समझेंगे कि दुनिया कैसी है, क्या है। दुनिया में आने का हम सबका एक प्रयोजन होता है, और उस प्रयोजन को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, हमारे इस दुनिया में आने के पीछे रीजन क्या है। तो ये रीजन समझेंगे हम, तभी हम आगे अपनी बात को बढ़ा सकते हैं, तभी हम जॉय ऑफ गिविंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप लोग समझिए कि आपके लाइफ का मिशन क्या है। हर एक का एक पर्सनल मिशन और विजन होता है लाइफ का। तो उसको समझ के आगे बढ़ना ही हमें एक काबिल इंसान बनाता है। यस प्रांजल, आपका हाथ बहुत देर से ऊपर है, आप बोल सकते हैं। प्रांजल। प्रांजल, आपको अपने आप को अनम्यूट करना है, हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मनीषा मैम, मनीषा मैम, यस। दो चीजें, बहुत सारे सवाल थे Q&A में, मैंने सबका आंसर दे दिया। एक, दूसरा, हमारे पास स्वाति है। हाल ही में स्वाति ने एक जॉय ऑफ लर्निंग डायरीज में पोस्ट लिखा है। अगर स्वाति अनम्यूट कर ले या आप उसे असिस्ट कर दें, मैं चाहूंगा स्वाति वो पोस्ट हिंदी में जो उसने लिखी है वो उसे पढ़ दे। और स्वाति हर बार लिख रही है, आप देख रहे हो, बहुत अच्छी पोस्ट आती है उसकी। आज यहाँ पे है मेरे ख्याल स्वाति, मैंने अभी स्वाति को नोटिस किया, यहाँ पे है, स्वाति है। अब स्वाति को रिक्वेस्ट करेंगे, उसको मैंने अलाउ टू टॉक कर दिया, आप उसकी पोस्ट स्क्रीन पे ले आए, फिर हम प्रांजल और अरदी को बाद में अनम्यूट करेंगे, अलाउ टू टॉक करेंगे। मैंने स्वाति को अलाउ टू टॉक कर दिया। स्वाति, आप बोल मार्क द सकते फुट हैं। एकेडमी से स्वाति मैम, हम आपकी ही बात कर रहे हैं, आप कंफ्यूज ना हो। सो मैं आपकी पोस्ट दिखाना चाह रही हूँ, आपको पढ़ना है स्वाति मैम। आप अनम्यूट कर लीजिए स्वाति, आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओके सर। मैम जस्ट एक मिनट रुकिए, मैं आपकी पोस्ट ढूंढ के निकालती हूँ। ओके मैम। स्वाति, स्वाति जी, बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम आपके। थैंक यू सर। आप इतने दिल से ड्राइंग करती हैं और लिखती हैं। आपको देख देख के आपके सारे बच्चे आपके क्लास में ड्राइंग करेंगे और लिखेंगे, और यही हमारा हैप्पी टीचर्स का मकसद है। आज कुछ सज्जन ने एक बड़ा अच्छी चीज कही, सर आप आराम से तो बात कर सकते हैं। यस सर, आराम से बात कर सकते हैं, बट एक चीज समझिए, जो पुलिस मैन क्रॉसिंग पे खड़ा होता है उसकी ड्यूटी बहुत कठिन होती है, और क्रॉसिंग पे कई बार उसको आंखें दिखा के भी लोगों को रेड लाइट पे रोकना पड़ता है, तो वो आपको अच्छा नहीं लगता। जब हम डिसिप्लिन करते हैं एज अ टीचर, हमें कैरेट और स्टिक दोनों यूज करने पड़ते हैं, और वर्चुअल क्लास में हमारी जो वॉइस मॉड्यूलेशन है वो कैरेट और स्टिक है। तो अगर आपको लगा हो कि मैंने कोई पुलिसमैन का डंडा ज्यादा दिखा दिया, मनीषा मैम जानती है मैं डंडा दिखाने वालों में से नहीं हूँ, मैं तो डर के जीने वालों में से हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगा हो, मैं खुलेआम 100 बच्चों के बीच में हाथ जोड़ के माफी मांग लेता हूँ, और मैं कोशिश करूंगा आगे से और आराम से बोलूं। थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल जॉय ऑफ गिविंग। यू गिव मी अ लेसन विच इज जॉय ऑफ गिविंग। इसमें कोई पैसे तो थे नहीं, आपने सिर्फ प्यार से अपना हक समझा। अगर आपको कोई समझाता है या आपको कुछ आश्वासन देता है या आपको कोई गाइडेंस देता है या कुछ पॉइंट आउट करता है,
वो इसलिए करता है क्योंकि आपको वो चाहता है। आप Yes, sir. चाहने वाला वो सबसे जरूरी है। मेरे माँ बाप मुझे थप्पड़ मारते थे, आजकल तो माँ बाप मार नहीं सकते। उसका ये मतलब नहीं वो हमारे से प्यार नहीं करते थे, वो हमारे लिए सब कुछ दे सकते थे, इतना तक कि अपने दिल पे हाथ रख के भी हमें थप्पड़ मार देते थे। और वो है असली प्यार और असली गिविंग। स्वाति, आप पढ़ पाए? Yes, sir. प्लीज Yes, अपनी sir. पोस्ट पढ़ दीजिए बेटा। जब हम अपने मन से कोई ठोस संकल्प लेते हैं तो वह केवल एक विचार नहीं होता, वह एक दिशा बन जाता है। यह एक लक्ष्य की ओर बढ़ने का पहला मजबूत कदम होता है। मेरे लिए संकल्प सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि यह आत्मबल और आत्मविश्वास की यात्रा की शुरुआत है। बचपन से ही हमने सीखा है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। जब हम मन से किसी भी लक्ष्य की ओर बढ़ने लगते हैं तो रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। मेरे जीवन में जब स्वाति कोई। मैम, यस कुछ मैम। बच्चे कह रहे हैं कि थोड़ा फास्ट है, थोड़ा आराम आराम से पढ़ ले। ओके मैम। आजकल एक भारत में ट्रेन आ गई है ना, वो बहुत फास्ट है। सारे उस ट्रेन की सफर करते हैं, कोई भी मेल में नहीं जाता या गुड्स ट्रेन में नहीं जाता। मनीषा मैम, गुड्स ट्रेन की स्पीड भी बढ़ गई, इलेक्ट्रिक हो गई है। यस मैम, थैंक प्लीज स्टार्ट। यू। जिसने मुझे आगे बढ़ने का हौसला दिया। मैंने अनुभव किया है कि जब संकल्प दिल से लिया जाए तो पूरी कायनात उसे पूरा करने में मदद करती है। फिर चाहे वह पढ़ाई का लक्ष्य हो, भी किसी की मदद करने का इरादा हो, या खुद को और बेहतर बनाने की चाह। दिल से लिया गया संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाता। संकल्प हमें अनुशासन सिखाता है। यह हमारे विचारों को दिशा देता है, हमारे कर्मों को अर्थ यह हमें भीतर से मजबूत बनाता है, ताकि हम जीवन की हर चुनौती को डटकर सामना करें, न कि उसे डरे। आज की इस डिजिटल युग में जहां ध्यान भटकाना आसान है, वही संकल्प हमें अपनी दिशा याद दिलाता है। यह हमारी सोच को स्पष्ट करता है और हमारे उद्देश्य को जीवन का हिस्सा बना देता है। अतः मैं यही कहूंगी, संकल्प कोई दिखावे की चीज नहीं है, बल्कि आत्मा की आवाज है जो हमें खुद से मिलाती है। संकल्प का मतलब है खुद से किया गया वादा। यह वादा हमें तब मजबूती देता है जब दुनिया हमें कमजोर समझती है। मैंने सीखा है कि संकल्प लेने के बाद हर दिन मेहनत जरूरी होती है। हर छोटी कोशिश एक बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ता कदम होती है। संकल्प केवल हमें मंजिल की ओर नहीं ले जाती, बल्कि हमें खुद को समझने और जानने का रास्ता भी देता है। यह हमारे मन के भीतर छुपे विचारों को बाहर लाता है और हमारी आंतरिक क्षमताओं को पहचानने का अवसर देता है। मैंने अपने जीवन में महसूस किया है कि जब रास्ते कठिन होते हैं तो हर कोई साथ छोड़ देता है। केवल संकल्प ही होता है जो हमारे साथ रहकर जीवन में दिशा दिखाता है। डोंट गिव अप, वॉक अलोन नीडेड। संकल्प तो फिर खुद को भूल जाओ, बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाओ। वक्त चाहे कितना जितना भी लगे, पर अगर संकल्प सच्चा है तो मंजिल जरूर मिलेगी। थैंक यू सर। स्वाति, बहुत अच्छा। स्मॉल स्टार्ट, बिग ड्रीम, स्ट्रॉन्ग विल, दैट इज संकल्प। आपने जो हमें ये एक सेंटेंस दिया है, ये माय गुड स्कूल को बहुत बेहतर तरीके से खिलता हुआ विकसित कराता है। बहुत अच्छे। आई मीन, मैं मेरी आंखों में आज आंसू आ गए आपको पढ़ते हुए देख के। भगवान आपका भला करे और आप ऐसे लिखते रहें, पढ़ते रहें। देखिए, जब हम आपके विलेज में आते हैं, आपकी स्कूल मैनेजमेंट बोलती है कि सब इंग्लिश बोलें। क्यों बोलें? और मैं आपको आज शुरू से अब तक कह रहा हूं, भाषा का कोई मतलब नहीं है। इज्जत, प्यार, सेवा भाव, इसमें भाषा नहीं चाहिए होती। यस सर। आपने इतने अच्छे तरीके से लिखा। जैसे पहले एक सज्जन ने हिंदी को इंग्लिश में लिखा, वो भी एक और तरीका है कम्युनिकेशन करने का। हमारा जो मकसद है माय गुड स्कूल में, पहला है पढ़ो, फिर हमारे साथ अपनी सोच शेयर करो, जिसको रिफ्लेक्शन या आईना दिखाना कहेंगे।
जब हम ये करते हैं स्वाति, हमारी रिलेशनशिप अपने आप से ही इम्प्रूव हो जाती है और अपने आसपास के लोगों के साथ भी इम्प्रूव हो जाती है। अगर यस हम सर। रीडिंग, रिफ्लेक्शन और रिलेशनशिप पे ध्यान देंगे तो हमें जरूर जॉय ऑफ लर्निंग मिलेगा। थैंक यू स्वाति, गॉड ब्लेस यू। हमारे दो थैंक यू सर। हाथ थक गए मनीषा मैम। एक तो है आयन मिश्रा, यार इसको मिश्रा। लोअर हैंड कर दें। आयन पहले आप, फिर आराधी। आराध्या। आयन बोलिए, हिंदी में बोलना पड़ेगा जो भी बोलना है, अब हिंदी का टाइम है। अ- अयान शायद नहीं बोलना चाह रहे, उसने हाथ नीचे कर दिया। आराध्या, आप बोल सकते हैं। आयन आराध्या। माइक कह रहे हैं, उसका क्या मतलब है? आयन कह रहे हैं माइक। जय हिंद मैम। जैन बेटा। मैम हम लोग गरीबों का कैसे बिना पैसा सहायता कर सकते हैं? बेटा, गरीबों को हम कैसे बिना पैसों की मदद कर सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। तो हम कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं? हम खुद अगर पैसे कमा के नहीं दे सकते तो उनके लिए आप हेल्प को हम जनरेट कर सकते हैं। हम कुछ तो अपने लिए भी कमाएंगे ही, और उनको हम वो जनरेट करके, यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं है कि कैसे उनकी हेल्प करनी है, क्या पैसे ही जरूरी है? यहाँ पे ये क्वेश्चन था। पैसों से हेल्प तो करनी है। उनको हम एक ऐसी जगह भी ले जा सकते हैं जहाँ पे वो खुद अपनी हेल्प कर सके, उनको नौकरी दिलवा सके, या उनको हम कुछ काम ऐसे सेट करके दे सके जैसे वो खुद कमा सके। तो ये भी तो हेल्प हो गई ना बेटा। आप आदमी को एक बार खाना खिला दोगे, दो बार खिला दोगे, पांच बार, बट अगर सारे जिंदगी उस आदमी को खाना खाना है तो उसे थोड़ी मेहनत करनी है। तो यहाँ पे मोटिवेशन आ जाएगा। मनीषा मैम, छोटी सी चीज है। आप गाड़ी में जा रहे हैं, कोई सड़क क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, प्लीज स्टॉप नेक्स्ट टाइम। दैट इज हेल्प। सिंपल मैं बता रहा हूं। जो रोड क्रॉस करने वाला होता है उसे प्लीज रास्ता दीजिए, और जब आप देंगे आपको रास्ता मिलेगा। इसमें पैसे की जरूरत तो नहीं है ना। आप किसी से प्यार से बात करते हैं। अब हम माई गुड स्कूल में काम कर रहे हैं, बड़ा सेल्फिश एग्जाम्पल है। क्या आप हमें पैसे दे रहे हैं माई गुड स्कूल में आने का? नहीं ना। अब मेरे पीछे इतना कुछ बना हुआ है, इंस्टीट्यूशन बना हुआ है, इसकी पे कौन कर रहे हैं? कोई वेल विशर है ना। सो और एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल जो आया था, जो नवजोत जी का था। सर। रीना मैम कुछ कहना चाह रही हैं, रीना सर। मैम। जी। सर रोड पे चलने के लिए तो टैक्स पे कर रहे हैं ना, पैसा दे रहे हैं। नहीं नहीं, रोड पे चलने के लिए नहीं बेटा, आप समझ रहे हैं। मैं कुछ और कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, कोई क्रॉस करना जा रहा है, लोग स्लो भी नहीं होते उसको क्रॉस करने के लिए। टैक्स यस। की बात नहीं हो रही। आप प्लीज पैसे की चीज मत सोचिए, आप समय सोचिए। अब मैं आपको समय दे रहा हूं, आप मेरे साथ अपना समय मेरे साथ शेयर करें। ये भी एक जॉय ऑफ गिविंग है बेटा। आप किसी से प्यार से 2 मिनट बात कर लें, वो भी जॉय ऑफ गिविंग है। आप किसी के लिए आप स्कूल से बाहर जा रहे हैं, क्या आप गार्ड से कभी 2 मिनट बात करते हैं आराम से? प्लीज कीजिए नेक्स्ट टाइम। दैट इज सिंपल गिविंग। यू डोंट नीड मनी फॉर दैट। The sad part today is, for us, giving has become money, donation. But that's not it. इस एग्जाम्पल में, इस चैप्टर में आपने देखा कितने उन्होंने एग्जाम्पल दिए कि लोगों ने दिल खोला। दिल खोला इज द मेन थिंग। आप जाके देखिए, दिल्ली में एक एग्जाम्पल देता हूँ, अगर कोई दिल्ली में से है, मेडिकल इंस्टीट्यूट के बाहर कितना लोग खाना खिला रहे होते हैं, क्योंकि वहां लोग बाहर से आए होते हैं, उनके पास किचन नहीं होता, वो रैन बसेरा में रह रहे होते हैं, फुटपाथ में बैठे होते हैं, उनके परिवार के लोग वहाँ इलाज करा रहे हैं, परंतु उनको खाना खिलाने बहुत सारे लोग आते हैं, आपको पता भी नहीं कौन आता है और किसको खाना खिला के चले जाता है। बहुत सारे तरीके हैं आप हेल्प कर सकते हैं। आप 2 रोटी खाते हैं ना, अगर आप एक दिन में एक खा लेंगे, एक दे देंगे, वो भी गिविंग हो गया। तो इसलिए एवरी स्मॉल ड्रॉप, एक एक बूंद से घड़ा भरता है। एक एक छोटी छोटी जॉय से बड़ी जॉय बनती है। ये है इसका मतलब। इतना इसको डिबेट मत कीजिए कि पैसे के बगैर कुछ नहीं हो सकता। मैं मानता हूं पैसे के बगैर कुछ नहीं होता, बट बिल गेट जैसे लोग भी हैं जो पैसा देते हैं। भारत सरकार भी अगर टैक्स लेती है तो टैक्स खर्चती है। अब हम आगे डिबेट नहीं करेंगे, ये एंडलेस डिबेट है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जिसके पास हो वो दे, वो भी अच्छा। जिसके पास ना हो और वो फिर भी कुछ दे, जो भी उसके पास है, वो बहुत अच्छा। मनीषा मैम, बहुत सारे हाथ ऊपर हैं आज। वेदा। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। जी वेदा, आ जाओ बेटा।
सर सबने लोअर हैंड कर दिया, सिर्फ आराध्या का ही हाथ ऊपर है। आराध्या, और कुछ आपसे कहना है? हाँ, वेदा का ही है। Vida, please speak. मैम आई एम ऑडिबल? Yeah, yeah, absolutely. सर मेरा एक ओपिनियन है, जैसे कि अगर हम लोग गुरुद्वारा जाते हैं, वहां पे लंगर खाने के लिए हमें कोई भी मनी पे करना नहीं पड़ता। और जैसे कि अगर आप कहीं देखते हैं कि कोई पुअर पीपल है क्या, जैसे कि बहुत सारे स्पीकर्स है जो लड़ते हैं लोगों के लिए। अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम उसके लिए लड़ते हैं। सो लाइक हम लोग का एक सेशन हुआ था एंटी बुलिंग, तो उसमें बोला गया था बी अ गुड बाई स्टैंडर, सो वी कैन फाइट फॉर द पुअर पीपल। बहुत अच्छा है ये, बहुत अच्छा आपने एग्जाम्पल दिया, बी अ गुड बाई स्टैंडर्ड। सर और जैसे कि फ्रीडम फाइटर्स भी थे, उन्होंने अभी अपनी लाइफ को गंवाया सिर्फ और सिर्फ इंडिया को फ्री करने के लिए, कॉलोनियल रूल को हटाने के लिए। गुड, जय हिंद। तो यहाँ पे अध्यांश ने बड़ा अच्छा लिखा है, लेंडिंग अ लिसनिंग ईयर, काइंड वर्ड्स और योर टाइम इज द ट्रू जॉय ऑफ गिविंग, एज एंड कास्ट नो बार, हाउ ब्यूटिफुल, time is yours. I will read. I've responded to P9. We don't want to find out who P9 is. We even answer to anonymous, so that's okay. Time is yours. You do not buy it, P9. Simply listening to someone is the best giving. And I think all of you had so much to say. Garima, please unmute. Manisha ma'am, गरिमा, is the last 1 minute, so I think we have to now stop. We've actually given 50% of the time for them to talk, and we have done. We have got used to this new method, and I'm sure वेदा का हाथ फिर ऊपर आ गया। वेदा बोलो, अगर आज बोल नहीं सकते चैट बॉक्स में लिख दो, क्योंकि हमारे यहाँ भी लिमिटेशन है, हम कितने लोगों का हाथ पकड़ेंगे। वेदा प्लीज अनम्यूट। सर सर मेरे पास एक बहुत अच्छा ओपिनियन है, जैसे कि लाइक हम लोग ट्री को कितना हार्म करते हैं, उसको कट करते हैं, बट वो मतलब वो बस इन एरिया को बैलेंस करने की कोशिश करता है। बट कभी ट्री को, बट हमने कभी ट्री के लिए नहीं बोला। ट्री भी तो एक हम लोग को कुछ तो दे रहा है, जिससे भाई ट्री हम लोग की लाइफ लाइन है। जी वेदा, हमने एक किताब पढ़ी थी पूरी ट्रीज पे, याद है आपको बेटा? ये जो हमने सीक्रेट लाइफ ऑफ एनिमल्स जो प्लांट्स पढ़ी थी पहले, उसमें ट्री की ही पूरी कहानी है। जो हमने किताब पढ़ी थी, इस ये मनीषा मैम जो अपनी वृंदा मैम किताब पढ़ रही हैं, सेम ऑथर ने पहले हमने ट्रीज वाली किताब पढ़ी थी। और जो वेदा ने कहा, अगर आप जॉय ऑफ लर्निंग डायरीज में सर्च करेंगे, हिडन लाइफ ऑफ ट्रीज, थैंक यू यश, मैं तो नाम ही भूल गया था, हिडन लाइफ ऑफ ट्रीज, यश थैंक यू सो मच। सो ये हिडन लाइफ ऑफ ट्रीज वेदा आप ढूंढना, आपकी लाइब्रेरी में है, आपके स्कूल में। आपके स्कूल ने, फिर जो आपने कहा ना, ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं उस किताब में। एक Q&A में क्वेश्चन है, वेदा सनबीम बनाओ, ओके यस, कुछ उसमें है ही नहीं, दैट्स ओके। सो वैभव ने कुछ लिखा है कुछ Q&A में, वैभव कह रहे हैं यस, ओके परफेक्ट, थैंक यू, आई एम ग्लैड आप Q&A पे यूज कर रहे हैं। तो आपको मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप Q&A यूज करें, ये बहुत आसान तरीका है। यस, चैट बॉक्स जरूर है, Q&A भी बड़ी अच्छी चीज है जो आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें हमने तकरीबन सबके आंसर टाइप कर दिए हैं, सबको रिस्पांस कर दिया है, कोई रिस्पांस पेंडिंग नहीं है इस वक्त। चैट बॉक्स भी क्लियर हो गया, Q&A बॉक्स भी क्लियर हो गया, टाइम भी पूरा हो गया मैम, हमने पूरा टाइम दे दिया, और 1 मिनट उससे ज्यादा दे दिया। अगर हम 40 लोग यहाँ हैं, सब 1 मिनट देंगे, हमने 40 मिनट दे दिए। देखा कितना जॉय ऑफ गिविंग था उस 1 मिनट में। ओवर टू यू मनीषा मैम। थैंक यू सो मच। अगले हफ्ते फिर आप हम आपके लिए वेट करेंगे, ज्वाइन करिए अपने क्वेश्चंस के लिए, सब कुछ। रिफ्लेक्शन सर ने बोला था, इसमें चैट बॉक्स में भी लिख सकते थे और मुझे भी भेज सकते हैं। तो आप अपने टीचर से अप्रोच करिए अगर आपके पास नहीं है वो फैसिलिटी मुझे डायरेक्ट भेजने की। एंड थैंक यू सो मच। विथ माई ड्राइव एंड 4 days, I
Request मनीषा मैम, Sandeep sir to close आप it. चैट डाउनलोड कर लें मनीषा मैम, उसमें से आपको कमेंट्स मिल जाएंगे। आप ठीक है। चैट डाउनलोड करके कमेंट्स को भी रिप्रोड्यूस कर सकती हैं फॉर योर क्वेश्चन। डोंट वरी अबाउट कि आपने इस सेशन की समरी डाउनलोड की कि नहीं। वीडियो तो आएगा ना मैम, यूट्यूब विल टेक केयर ऑफ दैट। यूट्यूब आएगा, यूट्यूब एक आध घंटे में लाइव हो जाएगा। तो इसलिए आपको वैसा रिफ्लेक्शन नहीं बनाना जैसे आप पहले बनाते थे। आप चैट बॉक्स देख लीजिए और एक जेनरिक पोस्ट लिख दीजिए फ्रॉम द कमेंट्स इन द चैट और वट एवर यू लाइक, मेक इट दैट वे। डोंट बॉदर अबाउट आंखों देखा हाल। वो वीडियो ज्यादा अच्छा बताएगा और यूट्यूब में आंखों देखा हाल बहुत अच्छा आएगा। उसमें शो नोट्स भी आएंगे, आप देखना। और शो नोट्स जब आते हैं तो उसमें बहुत कुछ कवर हो जाता है। आप लोग शो नोट्स वीडियो में खोलते नहीं हैं। आप वीडियो के अंदर अगर आप शो नोट्स खोलेंगे तो आंखों देखा हाल वहां पे मिल जाएगा आपको। मनीषा मैम को आंखों देखा हाल बनाने की जरूरत नहीं है। और एक ही सांस में आप सबको जय हिंद, गुड आफ्टरनून, बाय बाय, हैव अ ग्रेट संडे। मनीषा मैम, आपको बंद करना पड़ेगा, आप होस्ट हैं। नहीं सर, मैं कर दूंगी। मैं बस वो देख रही थी चैट बॉक्स कहाँ से डाउनलोड करना है।